Namaste everyone. Welcome to the Cārvāka podcast. This is your host Kushalmehra. All right, time for another podcast, and today we're going to be talking about hijabs versus saffron shawls. अभी कोई बोलेगा कि shawl क्यों बोल रहे हो, scarf बोलो, जो बोलना है बोलो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे. But just to give you guys a brief background about it, as you know, recently in the state of Karnataka, in a particular school, it all started from 6 students who wanted to attend classes wearing a hijab. Now, there seems to be a controversy about whether they were wearing a hijab or whether they were wearing a burqa. The facts seem to be all over the place. I don't know, but this has led to a humongous discussion all over the country, on the media, on the ground, everywhere. Everybody seems to be having a lot of views about it. So, what I was thinking was, okay, I'm going to do a podcast, but what I'm going to try and do in this podcast is I'm going to try and get different perspectives from different points of view. So, to discuss that, by the way, Amana will be joining us soon, but as of now, we have Nikhil and Khalid. Welcome. Thank you, Kushal, for having me. Thanks, Kushal. Pleasure as always. So, Khalid, this is your first time on the podcast, so batting तुमसे opening करते हैं क्योंकि तुम्हारी पहली है तो डेब्यू मार रहे हो तुम चारवक पॉडकास्ट पे. So पहली बात तो Khalid, I'll request you to tell a little bit about yourself and then just a general thing. So, what do you make of what is happening right now, and what are your feelings about this whole issue in general? Yeah, so I basically am someone who's a student of current affairs. It's something I'm passionate about. I like following, and over the years, people have appreciated some of my write-ups and posts, and that gave me and Amna the confidence to start our own YouTube show. And India This Week by Amna and Khalid. That is what we do, along with our respective jobs. So that's my introduction. With regards to what is happening in this issue, I think if there was a term where we could use this Himalayanly disproportionate kind of response that is coming with regards to these protests. That is what is happening. It's a thing which has been blown out of proportion. The fear mongering now, which has started, the kind of protests that we are seeing pan India and people talking about it is just it's very misplaced. The issue was of of a particular preschool, pre-college university, pre-university college in Udupi, which is already a communally sensitive town. It has had its history of Hindu-Muslim clashes, and therein too, it is just these 6 to 8 girls who said that they were not. They did in December. Before that, they didn't even make that demand. Where in December they said that we don't want to wear we want to wear the full body veil and mind you, it's an all girls college, right, which they said. And after that there were other concessions made that you can keep the one of the colleges when it spread, and that's to 5 colleges. One of the colleges even said you can keep the burqa in the rooms and then attend the classes, and it's just the classes is not allowed for the uniformity of the thing. And after that it is picked up, and all the players have got involved into it. You have the usual mischief mongers, you have the ones who have their own agendas. So I think it's an uncalled for thing. And then this whole painting of, first the entire state of Karnataka, then India. I think it's an unnecessary thing, and now it's just got out of hand, and it should have just been nipped in the bud there. So that's how I see what the situation right now is. Kushal, you're on mute. Oh, sorry, I forgot to unmute Kushal, myself. you were on Sorry, mute. sorry. Yeah, sorry. So just to give everyone a brief perspective on everybody might think a lot of times on social media what happens is people try and assume that ये तो अभी हुआ है भारतवर्ष में तो अमन और शांति थी, फिर सडनली जी 2014 हुआ और वो क्या कहते हैं कि वो दुनिया भर के कुत्ते रोना शुरू हो गए कि बड़ा मातम छाया हुआ है जी, पता नहीं क्या हो गया. So I just wanted to share just a few news reports that I came across and और फिर मैं आपके पास आऊंगा बात करने. So this is a report of NDTV. देखो क्या होता है कि जब आदमी क्लेम कर रहा होता है ना तो सबसे सेक्युलर सोर्स के पास जाना चाहिए, और NDTV से सेक्युलर भारतवर्ष में कोई नहीं है. So this was a August 19th 2009 report by Maya Sharma of NDTV. Religious headscarf divides Mangalore College.
A Muslim student in Bantwal near Mangalore has decided to leave her college after it asked her not to wear her headscarf in class after Hindu students objected to wearing it. The interesting bit is here. The pressure to remove her religious symbol came not just from the college administration but many of her fellow students. They said, if you wear the scarf, we will wear saffron shawls, she says. Aisha first walked out of the college 2 weeks ago when she was asked to remove the headscarf, but she came back determined to attend college on her terms. But the college did not relent. The college administrators say they are caught in the middle of the dispute. They personally have nothing, I guess it was against her wearing the scarf, but want her to remove it in the classroom to do away with the tension. So this was in 2009. Now somebody might say, oh, it is, it is just about Islam and suppression of Islamic symbols. But is it? There was this report I came across from 2010, May 22. Bangles and bindis divide ruling Saffron combine in civic body. The Shiv Sena BJP alliance, this is from my great city, ruling the BMC, differ over Hindu girl students wearing accessories to school. So, Hindu girl students of 150 convents in the city wearing bindis and bangles to school, there are voices for it and there are voices against. The debate, it seems, will either rage or die down because there is a difference of opinion within the Shiv Sena BJP. So, this was, Gopal Shetty and Shiv Sena corporator Raju Pednekar. They were for Hindu girl students, and obviously there was opposition to it. So I'm just sharing a few reports to show that the heavens have not fallen suddenly, and it's not as if suddenly, matlab, asman phat gaya, zameen aa gayi. We go back to, especially Karnataka seems to be like a legend in this kind of stuff, right? So now we go to again 2012. Karnataka college bans burqa from classrooms. Mangalore does it again, states the report. An undergraduate college in Mangalore in coastal Karnataka has now made it official that women students will not be allowed to enter classrooms if they wish to wear a burqa or even a hijab. St. Aloysius College has now brought out a prospectus which reads, and I quote, students must be neatly dressed in accordance with the rule of approved etiquette. Girls are not expected to wear burqa in classrooms and in examination halls. The decision of the principal in this regard is to be accepted. It doesn't end here. Now, I tell you, man, Mangalore, they are the capital of the world in this stuff. Hijab issue erupts again in Mangaluru. This is a report from June 26, 2018. This is the St. Agnes College now. So, St. Agnes College, again, you have the same problem. So, what I'm trying to say here is that this is not a new subject, and I actually have a couple of more reports where, the Tamil Nadu Christian government school principal stops girls from wearing bindi. This was a Swarajya report of June 2000, I think 18. I'm not sharing the thing, but I'm just trying to tell you. So what my point is that ये कोई नई चीज नहीं है. Now अब मैं आपके पास आता हूँ ना. आपका क्या विचार है इस पूरे, अभी इसको क्या बोले, शगुफे जो छेड़े हुए हैं सब लोगों ने. So where do you come at this, not only as a female but also as a Muslim woman? आपका क्या विचार है इसमें? इस पूरे इशू का जो राजनीतिकरण बोलते हैं ना, पॉलिटिसाइज, वो किया गया है. सो आई एम ग्लैड दैट यू हैव शेयर्ड ऑल दोज न्यूज फ्रॉम द पास्ट. सो हमें ये चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई कि ये इशू पहले भी था, बट क्या बदला है एक्चुअली 2014 के बाद? बदला है एक ऐसा इकोसिस्टम है जो डेस्परेट है एक इमेज क्रिएट करने के लिए, जहां ये बताया जाए कि इंडिया की जो सेकेंड लार्जेस्ट सेकेंड मेजोरिटी बोलो या माइनॉरिटी मान लीजिए, क्योंकि एक जो यूज होता है वर्ड वो माइनॉरिटी है, तो जो माइनॉरिटी है स्पेसिफिकली जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके साथ इंडिया में बहुत बुरा हो रहा है. और ये नरेटिव चलाना है, उनको ग्लोबली चलाना है. उसके लिए वो कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसा मुद्दा मिल जाए, वो नजर में आ जाए, और उसमें जाकर के वो इसको जितना भी कहते हैं ना आग लगाना, बढ़ाना, उस मुद्दे को सॉल्व नहीं करना है इनको, इसको एक क्या बोलते हैं उसको, तिल का ताड़ बनाना जो बोलते हैं, वो करना है, ताकि फिर ये ग्लोबली. और होता क्या है कि जो ग्लोबली भी बहुत सारे मैं देखती हूँ कि डिसेंट लोग भी हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, जिनके ओपिनियन मेरे लिए मैटर करते हैं, वो भी
एक आर्टिकल पढ़ते हैं कहीं NY से, वाशिंगटन से, और शेयर कर देते हैं तुरंत। लेकिन मुस्तफ़ा अक्योल ने भी यही शेयर किया कि मुस्लिम वुमेन के साथ यहाँ पे इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इट इज नॉट गुड, वाइल आई फाइंड हिम वेरी वेरी इंटेलिजेंट मैन। तो क्योंकि बाहर के लोगों को इंडिया के विद इन क्या हो रहा है उसका इतना डिटेल नहीं पता है, और ये लोग आकर के इतना जब इशू बनाते हैं, इतना चिल्लाते हैं, तो वहां से भी देख के एक लगता है कि हाँ क्यों ऐसा हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, एंड पीपल जस्ट कीप शेयरिंग दिस स्टफ। तो एक राजनीतिकरण पूरा है जो इसका हो रहा है। एंड इसमें सबसे बुरी जो बात है, या जो पर्सनली मुझे बहुत परेशान करती है, वो ये है कि इस राजनीतिकरण के जो कहते हैं गाब में, उसके पर्दे के पीछे जो हमारे कम्युनिटी के रिग्रेसिव एलिमेंट हैं, उनको फुल सपोर्ट जा रहा है हमारे लिबरल सेक्युलर गैंग का। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो चीज हिंदू विमेन के लिए अच्छी है, वही चीज आप मुस्लिम विमेन के लिए भी अच्छा कहेंगे ना। जो हिंदू औरतों के लिए अच्छा नहीं है, वो मुस्लिम औरतों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये जो डिफरेंस आता है कि घूंघट तो रिग्रेसिव है, घूंघट के अगेंस्ट तो कैंपेन चलेगा, लेकिन हिजाब आपको वो राइट बना देते हैं, हिजाब एक चॉइस बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? उसका राजनीतिकरण करके। और यहाँ पे क्या होता है कि चॉइस किसकी चॉइस है, आप किसकी बात कर रहे हैं? ये जो कुछ एलीट मुस्लिम वुमेन हैं जो बैठ के ट्विटर पे लिख रही हैं, हाँ उनके लिए चॉइस हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम वुमेन डोंट इवन हैव राइट टू चूज देयर लाइफ पार्टनर। जो आप ऑर्डिनरी मुस्लिम विमेन की बात कर रहे हैं, उनको इतना कोई छूट नहीं मिलता है। उनके घर में एक सोच होती है, एक तरह की नजरिया होता है, वही वो फॉलो करते हैं। तो ये जो इलीट है हमारे, ये जो थॉट मेकर हैं, उनका काम ये होता है कि समाज में जो पहले से बनी हुई एक मानसिकता है, उससे उनको बाहर निकालना, राइट। उनको धीरे धीरे समझाना कि नहीं, आपकी ये जो विचार है ये अच्छा नहीं है, ये औरतों को सप्रेस करता है। लेकिन उसकी जगह पे ये खुद तो अपना इनके पास चॉइस है, रियल चॉइस है, लेकिन नीचे बैठे हुए को अब ये बोल रहे हैं कि तुमसे तुम्हारा ये हक छीना जा रहा है और तुम इसके लिए लड़ो। मेरे लिए ये बहुत ही दोहरा जिसको वार कहते हैं। एक तो उस आइडिया से कोई लड़ने को तैयार नहीं है, दूसरा जिनको इस आइडिया से लड़ना चाहिए था कि इट इज एक्चुअली पैट्रियार्की, वो इसी चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये डबल स्टैंडर्ड मुझे नहीं समझ में आता। राजस्थान के अंदर अभी 2020 में घूंघट के अगेंस्ट जो कैंपेन लॉन्च हुआ है, उसका नाम है घूंघट छोड़ो दुनिया देखो। ठीक है, रोज न्यूज़पेपर में आता है, क्योंकि मैं जयपुर में हूँ, मैं रोज पढ़ती हूँ। बट ये लोग कभी ऐसा कैंपेन क्यों नहीं चलाते, बुर्का छोड़ो दुनिया देखो? दे वुड नेवर से दैट। बट उससे भारत का सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता है ना हमना। हाँ, लेकिन वो नहीं कहते, चलो ठीक है मैं फिर भी थोड़ा एक्सेप्ट कर लूं, बट फिर वो बोलते हैं कि चॉइस है बुर्का और इनको नहीं पहनने दिया जा रहा। कितनी बड़ी जाति है! अरे जाति है मुस्लिम औरतों पे, मैं बोलती हूँ जाति है, पर जाति ये है कि उसको लॉ में इक्वल राइट नहीं मिल रहा। जाति ये है कि अभी भी 4 शादियां जो है वो अलाउ कर रखी है आपने कम्युनिटी को। जाति ये है कि हलाला जैसी रस्में हैं यहाँ पर। अगर आपको मुस्लिम औरतों के राइट और एजेंसी की इतनी परवाह होती, तो आप दिन रात इन चीजों पे रो रहे होते। आप दिन रात अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट लगाते कि किस तरह से इन औरतों को बराबर का हक मिले। वहां तो कुछ नहीं होता है इनसे। लेकिन यहाँ जहाँ पे उनको एक नैरेटिव बनाना है कि कितना इंडिया फासिस्ट है, कितना बुरा हो रहा है इंडियन वुमेन के साथ, और ये हिंदू जो है वो कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनका सारा आपको दिखता है, सारा का सारा एफर्ट और एनर्जी। तो मैं तो इसको इसी तरह से देखती हूँ, गड्ढे तो में और ढकेलने की कोशिश है। बिफोर आई कम टू निखिल, ना मेरे को एक्चुअली आपसे और खालिद से एक और प्रश्न पूछना था। सो देयर इज अ सीरीज ऑफ कमेंट्री, क्योंकि आपने टच किया अभी जैसे राणा अयूब ने वो फोटो डाली, उसको भी ढूंढनी पड़ी 2 साल पुरानी फोटो, बाय द वे। वैसे मानना पड़ेगा 2 साल में कभी उसने हिजाब ना बुर्का पहना, तो उधर ढूंढा आई स्टैंड विद मुस्लिम विमेन और वही हेड गियर के साथ। फिर जी प्रियंका गांधी ने तो मतलब वो क्या ट्वीट मारा, मतलब मेरे थोड़ा ऊपर से चले गया वो, थोड़ा मेरी इंटेलिजेंस कम है, माफ करना मुझे लोगों, आई एम नॉट दैट स्मार्ट। I mean, that's why I need smart people like Nikhil to teach me. So obviously they have said, matlab, Khalid, first you come, because Nikhil is going to need some time to explain the legalities of the issue. Khalid, is this the hill? Nikhil's not going to need any time. This is very straightforward. Nikhil's not going to. I'm here to listen more than talk today.
Okay, so Khalid, but is this the hill we want to die on? Like now, Priyanka Gandhi says whether it's a ghungat or a hijab, it's the female's choice. I mean, what are they talking about? Why is the goalpost being shifted about what are we supposed to do inside a school to what are we doing? And also, why are we normalizing? So, my question to both of you is just think about this scenario, huh, Khalid? जब मैं स्कूल में जाता था, अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं, मगर एक जमाने में मैं भी स्कूल में जाता था, so, we were taught gungat is a bad thing. Basically the concept was face veils are bad, they are regressive, they are ancient ideas that need to be rejected. So my whole thing is, imagine if we allow gungat and hijabs in the school, and then these poor girls are coming inside and the class is teaching that these face veils are really very bad things, they are being pressurized. Are we not othering the girl and traumatizing the girl? So Khalid, first you, or Amna, aap bhi batao. So I mean, what am I missing in this debate? See, what we are missing is that, this is a politically motivated campaign. You spoke about likes of Rana Ayub. The fact that they live in a liberal society where she has a choice to never don even a head covering, the credit to that goes to the Indian ethos. And obviously, unless and until it was not guaranteed by the majority, you could have the best constitution in the world, and yet she would have not had those liberties. The tragedy is that traitors like her, who carry out their agendas against India, whether it is the demonizing of the entire armed forces, whether it is supporting every secessionist movement in the country, this falls right in her alley, right? You can see that this is something where she'll exploit the fault lines. She will act as the messiah to these girls and put in constantly that victimization into their minds. And once they are completely victimized, and then they can be used as pawns for their, ideological battles which they have with the current regime. And this is a time and tested thing. Now the problem here is people from the majority community and even people within the Muslim community who are apprehensive of likes of Rana have all the reasons, because ultimately it was victimization only which led to this country being divided in three parts. So the point is that how much till what level will you test this same standard practice where you will keep on saying, and see, when you're constantly telling them you're a victim, you're a victim, you're a victim, the obvious the assertion is that it's because of this Hindu majority. So how different are your statements to any of the fanatics or any of the crazed terror ideologues who basically say the same thing? Now the problem is that India's secularism has been so twisted and it has been made so ugly that likes of Rana, who should have not got space, or who should have been discarded, are celebrated, and you're told that this is the voice you need to hear. And ultimately they're just a sophisticated version of any extremist within the Muslim community who uses the very liberal ecosystem and the fluidity of the system to basically say stuff which actually is working very very systematically with all the support from pan nationalistic ecosystems and frameworks to break the country, to get riots, to do everything possible. You look at this whole issue, right? इशू क्या है? इशू एक कॉलेज का है, वो 5 कॉलेजेस का बन गया है, उडुपी एक कोस्टल टाउन है, उसको आपने पैन इंडिया कर दिया है. उन लड़कियों को लार्जर जियोपॉलिटिकल इश्यूज क्या पता? डू दे नो दैट देयर आर 10 कंट्रीज इन यूरोप जहां बुर्का बैंड है? डू दे नो दैट देयर आर मुस्लिम कंट्रीज लाइक तुनिशिया, अजरबैजान, लेबनान, इजिप्ट तक जहां वेरिंग डिग्रीज में बुर्का बैंड है? डू दे नो दैट देयर आर कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान जहां आपके पास वो चॉइस ही नहीं है कि वेदर you cannot, like, you have to wear it, otherwise you have dire consequences? Do they know that in Iran, if you don't cover your head, then you can be imprisoned? I mean, there is a legal route. Before King Salman took over the reins of Kingdom of Saudi Arabia, again there was no, it was not a choice. So uske background mein, where in India you have the right to wear it, you have the right to not wear it, उस प्रिविलेज को अब्यूज किया जा रहा है कि भाई नहीं, एक कॉलेज ने बोल दिया तो इसको एक पैन नेशनलिस्टिक आइडिया बताओ. और ये गोल पोस्ट स्पेसिफिकली मासेस को गुमराह करने के लिए बता रहे हैं. किसी ने एक आर्गुमेंट दी, बड़ी डूबियस सी, हंसते हैं लोग लेकिन ये बहुत सिनिस्टर आर्गुमेंट्स होते हैं कि यार बाकी हिंदू तो अपने सिंबल्स पहनते हैं, मुस्लिम्स भी तो पहनते हैं, क्रिश्चियंस भी पहनते हैं,
लेकिन पब्लिक स्पेसेस में, नॉट लाइक जहां किसी का इंस्टीट्यूट हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट हो। तो ऐसे ही भटकाने की कोशिश की जा रही है। किसने किसी को रोका है? किसी ने तो नहीं रोका। तो अगर इतनी लिबरल सोसाइटी है जहां आपको पहनना है पहनिए, आपको नहीं पहनना है मत पहनिए, लेकिन एक ऐसे आइडिया को आप बोल रहे हैं कि उसमें इसकी स्पेस हो कि जो, जब वो पावर में होंगी, अगर उनका एक सोशल स्ट्रक्चर होगा, तो वहां वो आपको दूसरा चॉइस नहीं देंगे किसी और चीज पहनने का। और आपको एक ये चीज बताया जाएगा कि अगर आप ये नहीं पहन रहे तो आप मॉडेस्ट नहीं है, आप पायस नहीं है, आपका कैरेक्टर लूज है। तो वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस तो होगा ही। और वही आप देख रहे हो। और वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस तो सैकड़ों सालों से चल रहा है दोनों रिलीजन्स के बीच में। अब ऑनेस्टी होती नहीं है लोगों को बताने को कि कोर इशू क्या है, ताकि उसको सॉल्व करके आप नेशन बिल्ड करें। आप वही सिम्टम्स को, और फिर वो जो प्लेयर्स को पावर में आना है वो अपना एजेंडा चलाते हैं। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स देखिए, एक रोहिणी सिंह करके हैं, उसने, उसका एक पुराना ट्वीट है where she is mocking the burqa, and now because right now politically it helps in her arsenal, so she backs it. Similarly thing you see with Urban Axel, Swara Bhaskar, she does the same thing. Again another tweet where she says ki hijab and lollipop is a bad analogy. Today she's saying no, we need to this. There was some Joy Das, some I think some commie guy who was saying ki who was taking digs at some Hindu goddesses sculptures, but today he's backing that thing. Or like the Congress thing, Ashok Gehlot, the Rajasthan chief minister, saying Gungat is bad, but his Congress president saying no, burqa is allowed. So they are just this fear mongering they're doing, right? I mean, they're just deviating the post, the goal post change कर रहे हैं. एक स्कूल ने कहा है, खत्म करो वहां पे, स्कूल के रूल्स को मानो, और डेफिनेटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी जो केरला की इतनी पावरफुल बॉडी है, उनके ऊपर 150 कॉलेजेस और कुछ मिला के 150 कॉलेज स्कूल्स हैं, उन्होंने 2 साल बाद पहले बैन कर दिया बुर्का का। सो इट इज अफेक्टिंग लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स। किसी ने कुछ नहीं कहा, बिकॉज वहां आपका अरिथमेटिक फिट नहीं हो रहा था। इट वुड हैव बीन मुस्लिम्स अगेंस्ट मुस्लिम्स। यहाँ आपका अरिथमेटिक फिट होता है। आपका जो सैफरन वालों के साथ आइडियोलॉजिकल बैटल है, और जो आपका कंप्लीट यू हैव हेट फॉर देम, यहाँ आप सीधा, आपके लिए वो एक दुश्मन भी मिल जाता है, और आप विक्टिमाइजेशन भी गेम। तो विक्टिमाइजेशन भी तो बहुत इक्वली डेंजरस और कम्युनल चीज है, और इसकी तो एक हिस्ट्री रह चुकी है। तो अफसोस की बात है कि अभी तक जो सेक्युलर लिबरल का जिनको ओहदा मिलता था इंडिया में, दे वुड सपोर्ट दीज थिंग्स। अब जब इंटरनेट आया है तो पीपल आर चैलेंजिंग दैट, तो वही कह रहे हैं कि अरे भाई ट्रोल्स आ गए। नहीं, पीपल आर चैलेंजिंग दोज years and years of layers of things you made. सो इक्वालिटी अभी भी कह रहे हैं लोग कि ठीक है, कॉलेज में अपना एक रूल होता है, मानो, सब मानते हैं, इसमें क्यों एक एक्सेप्शनलिज्म घुसाना है? इनफैक्ट ये तो प्रिविलेज है आपकी कि आप ये कर पा रहे हो। सो दैट इज हाउ आई सी इट। तो हमना फिर वो कहते हैं ना कि अरे सिखों की टर्बन अलाउड है, तो फिर हिजाब क्यों नहीं अलाउ होना चाहिए? बताओ क्यों नहीं होना चाहिए? एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मिस कर जाते हैं कि सिखों का टर्बन में कोई पैट्रियार्की नहीं है। आई थिंक वो जेंडर न्यूट्रल है, राइट। और जब हम हिजाब की बात करते हैं तो वो पैट्रियार्कल सिंबल है। आई थिंक, आई डोंट नो कि इसमें तो कोई डिबेट की भी जरूरत है। अभी एक चीज बहुत फनी है जो मैं सोचती हूँ कि जो चीज आईसिस और तालिबान औरतों के ऊपर जबरदस्ती इन्फोर्स करना चाहती है, वही चीज हमारे इंडिया की जो लिबरल विमेन है वो डिफेंड करना चाहते हैं इंडिया के अंदर। इमेजिन द स्टॉकहोम सिंड्रोम आयरनी। है ना? राइट, स्टॉकहोम सिंड्रोम है यहाँ पे। और ये जो बोल रहे हैं हिजाब हिजाब, टू बी फेयर मैंने देखा उसमें अबाया, बुर्के सब कुछ है, बट वो बोल नहीं रहे हैं कि हम बुर्कों को भी डिफेंड कर रहे हैं। वो स्पेसिफिकली ये टर्म यूज कर रहे हैं टू मेक अ नैरेटिव कि हिजाब भी नहीं हमको लगाने दिया जा रहा है। तो एक एक तो ये हो गया। दूसरा, मुझे बहुत ही मतलब ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है कि ये राणा यूब हो या ये लोग, इनका जो भी पूरा कबाल है, ये लोग इस्लामोफोबिया के बारे में बात करेंगे अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। बट कितनी औरतें हैं जो सब्जुगेट होती हैं, जिनके साथ बहुत ही इनजस्टिस होता है क्रॉस द वर्ल्ड इन फोर्स व्हील की वजह से। इस पे ये कभी बात नहीं करते। अगर इनको रियल में मुस्लिम विमेन की एजेंसी की इतनी परवाह होती तो कभी कुछ एक ट्वीट किया होता, कभी कुछ अवेयरनेस फैलाया होता। ईरान में क्या हो रहा है या बाकी कंट्री में जहाँ पे फोर्स कर रहे हैं वहां पे कुछ तो बात की होती, कभी नहीं की है। बट ये इजराइल पैलेस्टाइन की कंफ्लिक्ट हो या कहीं पे भी जिनको इनको लगेगा कि इस्लामोफोबिया, अभी तो यमन पे भी कुछ ट्वीट किया था राना यूब ने। तो वैसे ये अमाना, सॉरी एक मिनट, टू बी फेयर टू देम,
ऑल दीज पीपल, ये लोग सब लोग 2011, 2010, 2012, 2014, 2015 तक ये लोग यही चीज बोल रहे थे। इनका मगर प्रॉब्लम ये होती है ना कि अगर बीजेपी कह दे अर्थ स्फेरिकल है तो वो लोग बोलते नहीं, हम तो फ्लैट अर्थर है। उनकी प्रॉब्लम ये है। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बट इनके इस लड़ाई में ये क्या चीज कितना हार्म कर रहे हैं बेसिकली मुस्लिम सोसाइटी को ही, वो ये खुद आई डोंट नो ये समझते नहीं है, ये जानबूझ के अपनी आंखें बंद कर देते हैं। जैसे खालिद बोलता रहता है कि विक्टिमहुड बहुत बड़ा पॉइजन है। मैं इसको बोलती हूँ कि आप मुस्लिम को स्वीट पॉइजन खिलाते रहते हो बेसिकली। उससे बहुत अच्छी है कि उसको कड़वी दवाइयां दो, क्योंकि उसे जरूरत है इंट्रोस्पेक्शन की। बट इंट्रोस्पेक्शन की जगह पे जिस चीजों पे उसे इंट्रोस्पेक्शन करना है उसको आप सिंबल बना के ले आते हो रेजिस्टेंस का। एक चीज अर्शिया मलिक है, उनसे हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि इंटरनेट आने के बाद जो मुस्लिम सोसाइटी है या इस्लाम रिलीजन है, जो एक कोने में पड़ा हुआ था, कोई इस पे ध्यान नहीं देता था, वो चीज बदल गई स्पेशली 9/11 के बाद। तो क्या हुआ कि अब हर लोग ध्यान देने लग गए कि क्यों है, क्वेश्चंस पूछने लग गए, जो कि अलाउ होना चाहिए किसी भी फेथ पे, किसी भी सोसाइटी पे। एक ओपन डायलॉग होना चाहिए, अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट सब चलता है। तो वहां पे कुछ लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि कुछ चीजें हम डिफेंड नहीं कर पाएंगे, हम आर्ग्यू नहीं कर पाएंगे, तो हम ऐसा गेम प्ले करें जहां लगे कि हम तो बात लिबरलिज्म की कर रहे हैं, हम बात तो डेमोक्रेसी की चॉइसेस की कर रहे हैं, बट उसी चॉइसेस के अंदर हम अपने उस एलिमेंट को उसका सिंबल बना दे जो बेसिकली स्टैंड ही नहीं करता, जो अगेंस्ट है उस आइडिया के, लेकिन हम उसको बना दे कि ये सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है, सिंबल ऑफ चॉइसेस है। एंड शायद ओवरऑल द वर्ल्ड यही हुआ है कि हिजाब को इस तरह, क्योंकि हिजाब का एक ये भी सिंबल था कि जो लड़कियां बहुत ऑप्रेस हैं, जो बोल नहीं पाती हैं, मोस्टली वही डॉन करती हैं हिजाब या बुर्का। बट उन्होंने एक ऐसी लड़कियां खड़ी की जो बोल पाती थी, जो रेजिस्टेंट कर पाती थी। तो आपको लगता है कि ये लड़कियां ऐसी तो नहीं लग रही मुझे, दबी कुचली नहीं है, दे आर स्पीकिंग, दे आर वेरी empowered in their sense, but they are donning the hijab। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एक आर्ग्यूमेंट होता है, जो एक कम्युनिकेशन होता है कि हाँ ये सिंबल है, क्या ये औरतों को किस नजरिए से देखता है, क्या ये औरतों को नहीं बोलता कि तुम अपने आप को हाइड करो, तुम बॉडी शेम नहीं कर, सॉरी विक्टिम ब्लेम जिसको बोलते हैं, उसी का एक फॉर्म है जहां औरतों को बोला जाता है कि तुम्हारे साथ अगर कुछ गलत होता है तो तुम्हारे ड्रेस में प्रॉब्लम है, राइट। ये दूसरी औरतों को भी शेम करता है जो नहीं पहनती हैं कई बार। तो इन सब आर्ग्यूमेंट में जाने से बचने का भी एक बहुत अच्छा तरीका रहा है ये। एंड मे भी ये उस, और ये पूरा ग्लोबल नेटवर्क है। आप देखिए इन लोगों को कितने अच्छे से इस ग्लोबल नेटवर्क में काम करने को मिलता है, इनका करियर बन जाता है, तो ये क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे। तो हमें कभी इस पर्सपेक्टिव पर भी सोचना चाहिए कि एक तरीका है जहां पे ये कम्युनिकेशन को रोक दे। सेम यही एक तरीका है इस्लामोफोबिया, वो वर्ड जो है इन्होंने क्वाइन किया है। मैं बोलती हूँ कि आप बोलिए मुस्लिम फोबिया बोल सकते हैं, देयर कैन बी बिगेटरी अगेंस्ट जस्ट मुस्लिम आइडेंटिटी, वो एक वैलिड, और है इंडिया वो में एक वैलिड आर्ग्यूमेंट हो सकता है। बट क्या करते हैं इस्लामोफोबिया, ताकि कोई भी वैलिड क्रिटिसिज्म या अगर वैलिड डायलॉग है तो वहीं पे शट डाउन किया जा सके। यही एक मुझे दिखता है यहाँ पे, जब बुर्के को ये लोग सिंबल बनाने की कोशिश करते हैं, ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं, नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वुमेन एंड चॉइसेस एंड एजेंसी ऑफ वुमेन। तो ये जो चीज है हमें और डीप कन्वर्सेशन में जाने की जरूरत है। पॉलिटिकल इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि इनको बीजेपी से हेट है तो ये कर रहे हैं, बट इसके साथ में ये पैरेलल बहुत ही डीपली साइके में काम करता है। और इससे जो मुस्लिम है, देखिए पीपल वोंट बिलीव बट मुस्लिम सोसाइटी में भी बहुत अच्छे से एक चर्निंग चल रही है, स्पेशली अगर आप यूरोप के मुस्लिम एंड इवन अरब के मुस्लिम में काफी सारे ऐसे बुक्स हैं जो डाउनलोड, कलरशिया दी ने मुझे बताया कि रिकॉर्ड डाउनलोड हुए हैं। ये बुक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट इट्स अबाउट लाइक रिचर्ड डॉकिंस की गॉड डिल्यूजन। हाँ, वो रिकॉर्ड डाउनलोड हुए हैं, तो इससे आपको समझ में आएगा कि पापी हूँ ना, मुझे मालूम speaking... होता है ये बुक्स के बारे में। तो एग्जैक्टली, सो यू कैन सी कि पीपल आर बीइंग वेरी क्यूरियस, दे आर ट्राइंग टू लर्न, बट वो जो चीजें हैं वो उसको कहीं ना कहीं पीछे करने के लिए ये एक इस तरह का, जहाँ पे विक्टिमहुड का नैरेटिव और ट्राइबलिज्म बहुत अच्छा वे होता है प्ले करने का।
क्योंकि देखिए मुझे अगर समझ भी आ रहा है कि मेरे फैमिली में ये प्रॉब्लम है, ठीक है, एंड आई वांट टू रिफॉर्म इट, बट आप इसको किसी तरह से मेरे फैमिली वर्सेस अदर फैमिली में जब चेंज कर देते हैं, तो मैं उसको रिफॉर्म करना चाह के भी कई बार बैकफुट पे आ जाती हूँ, मैं नहीं बोलूंगी, या फिर मुझे लगेगा कि मुझे फिर वो उस फाइट के बिटवीन कहीं ना कहीं अपने वालों के लिए एक बिगटरी आ जाएगी कि नहीं ये तो कुछ ज्यादा ही अब मेरे फैमिली को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो कनेक्शन थोड़ा बहुत रहता है, उसी ट्राइबलिज्म को बहुत ही स्मार्टली प्ले करते हैं ये। मैं इसमें अभी न्यूज चैनल पे गई थी, न्यूज 18 के, तो वहां पे उडुपी कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं वो आए थे और उन्होंने बोला कि 75 मुस्लिम बच्चे हैं जो क्लासेस में बैठ रहे हैं और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उनको नहीं चाहिए इस तरह का कुछ हिजाब हिजाब। लेकिन आप देखिए 8+ क्या रेशियो है 75 का, बट उन 8 लड़कियों पे एक पूरा वो बना दिया गया कि पूरी मुस्लिम लड़कियां उनको नहीं जाने दिया। इट्स लाइक इशू ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, जबकि वो 8 लड़कियां हैं, 75 वहां पे आराम से पढ़ रहे हैं। और अब ये इशू बढ़ते बढ़ते बन गया है, कन्फ्लिक्ट का रीजन बन चुका है। और यही हमेशा होता है, वो फ्रिंज जो होते हैं वो खड़े होते हैं, वो स्टार्ट करते हैं, एंड देन ये कैचअप करता है, एंड देन ट्राइबलिज्म में कुछ भी नुआंसेस नहीं बचते हैं। True. So Nikhil, first of all, sorry to keep you waiting for a while, but let me frame this whole thing. And I say this because मैं तेरे साथ offline भी था, and I was telling you I'm genuinely confused about this issue. I was, Anki also shared her, article from Bar and Bench about this whole essential religious practices thing. So Nikhil, my request to you is please take some time and explain to us what is the legal history when it comes to cases like this about religious outfits or symbols inside educational or government or any kind of private institute, and what is this whole essential religious practice thing, because this is like Abdul Qadir's googly, which I'm not able to pick. Before I start, I wanted to first say that I'm just so impressed by both the panelists who I've heard before today. So for me, this was to see their clarity of thought, to see their complete vision of what is going on, what are the issues at play. It's very heartening, and it was very educational for me. Essential religious practice, you've given me the hardest task. This is a very complex thing. But let me start with the Constitution, always the best place to start. Article 25(1) of the Constitution essentially opens with the words, subject to public order, morality, and health, and other provisions of this part, right? All persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice, and propagate religion. So, if you look at Article 19, which is another article which deals with fundamental freedoms, the structure there is slightly different. The structure is, in 19, first the freedom is set out, all 6 freedoms are set out, and then there are restrictions that are issued against each fundamental freedom. So the right is deemed to be the fundamental freedom is deemed to be the principal area which will command the legal space, and a restriction is something that needs to justify itself. That is the structure constitutionally. When you look at Article 25(1), the way it is phrased is different, which is the restriction comes first and then the right follows. Right? And this is because the restriction is first in the drafting of the Constitution. The restriction is placed first. I'm looking at your face, Kushal, and you're looking confused. So if you have a question, you can jump in anytime. But but why does it matter what comes first? And I'll tell you why it matters. This is what I'm trying to explain. Why it could have mattered. It could have mattered because what the framers are then trying to show is that in the case of fundamental freedoms under 19, the freedom will hold the field. First, you have to determine whether the issue is one of liberty or not, and then the restriction has to justify itself. Whereas if you put the restriction first, you could have very easily interpreted it to mean we are siding religion away, and the secular field of lawmaking will hold the field first. So, if the law is relatable to any of these heads, public order, morality, and health, if it is relatable, it is protected. It doesn't matter what else follows. Right? That is one interpretation you could have had. Instead, what we did was this. For the first, where does this idea
of a essential religious practice come from? I read the section article to you. The article does not distinguish between qualitative aspects of religious practices. There is no essential religious practice test that can be determined from any set of words within Article 25. Exactly. Right? So it was imported in. And what is generally cited is uh, a speech by Ambedkar, by Baba Sahib Ambedkar. And what he had said in 19, and this is on 2nd December 1948 in the Constituent Assembly. And this is what he had said. He said, the religious conceptions in this country are so vast that they cover every aspect of life from birth to death. There is nothing which is not religion, and if personal law is to be saved, I am sure about it that in social matters we will come to a standstill. I do not think it is possible to accept a position of that sort. There is nothing extraordinary in saying that we ought to strive hereafter to limit the definition of religion in such a manner that we shall not extend beyond beliefs and such rituals as may be connected with ceremonials which are essentially religious. This is where the word comes from. Nowhere else have I seen the word essential religious practice anywhere. Now, but if you look at the meaning of what he was saying, please distinguish between what is secular and what is essentially religious. What we have now as an ERP is digging into the religion and saying, is this core of the religion or not? So there's been a complete deviation from where Ambedkar started and thought of this, and where Ambedkar's conception, therefore, was what I just spoke to you in terms of an interpretation, possible interpretation of 25 at the start, which is when you look at a law, which you can say, someone comes and complains, infringes upon their religion, your determination solely has to be whether this is a law properly of the secular field. And if it is a law properly of the secular field, justified by those three heads under 25, then there is no question of religion. Okay. This is how and this is the interpretation the Supreme Court was essentially putting on Article 25 for the first 10 years. Whenever I've done podcasts with you, Kushal, I've always told you the first 10, 15 years of Supreme Court judgments are just so phenomenally, conceptually clear. Right? At some point from the high courts, we started to delve into this disease of, is this an aspect of the religion itself? And it actually came first and foremost from a judgment which challenged, from a UP government order where bigamy was challenged. Sorry, the government order barred bigamists from public services, right? From public employment. That rule was challenged. And it was taken up to the Supreme Court, and it was said, this is an essential religious, this is a part of our religious practices. And the court then turned around and said, this is not an essential religious practice. My view is, you didn't need to go there. You did not need an ERP to say anything at all. You could have simply turned around and said, this fits under public order, morality, and health, because the structure of 25(1) is that those prevail over your religious rights. Therefore, the law is saved. End of story. Right? So, what is the underlying logic to the ERP that eventually emerged? That you cannot reform a religion out of existence. Brilliant point. That's the fundamental concept of ERP. You cannot reform a religion out of existence. But then the problem becomes, now you have to choose what is the religion. And it leads to absurdity. So let me give you an example. Triple Talaq judgment, one of the most celebrated judgments in recent times. Very few people now realize it's a 3-2 majority. It's a wafer-thin majority. And the 3 majority, they have different reasoning. There's a 2-1 on their different reasoning also. That means there were 2 judges of the Supreme Court who turned around and said, instantaneous triple talaq is essential religious practice. Why? Because you can go to court and and this is exactly what was happening in the hijab hearing now, that we were saying, we will produce this hadith, we will produce this particular surah, and we will interpret it in this particular way and that particular way. And what
what that does is, you now become more instinctive than reasoned. That is my view of how the ERP operates. And that's not a good place for a judge to be, because you need to have solid grounding, right? So now let me give you another case about this. Much celebrated case. At that time, suddenly women's rights were seen to have been upheld. Up until 2011, at the Nizamuddin, no, not the Nizamuddin Dargah, at Hazrat Nizamuddin in Bombay. What's the Dargah in Bombay? I'm sorry, yaar. Haji Ali. Haji Ali. At Haji, apologies. At Haji Ali, women were allowed into the core sanctum till 2011-12. Then the trust said, we have now been educated on the correct Muslim law on the point, women will not be allowed. That was taken to the Bombay High Court. Bombay High Court, and I remember that day as the judgment came out, I did like a long thread on the judgment. And my entire premise was everybody's happy. They think it's some great victory for secularism and for feminism and for everything else. But what they are not looking at is the test applied by the Bombay High Court is ERP. So the Bombay High Court has not come out and said a secular law prevails over this regressive practice. The Bombay High Court has come and said, because it doesn't fit in Islam, and you haven't been able to prove to us that it is essential and a core facet of Islam, therefore this test failed. So what have you become? You are no longer a constitutional court. You are an ecclesiastical court. That is the biggest disease that the ERP creates. Who are you as constitutional judges with no knowledge of religion, with no knowledge or very limited knowledge of basically probably your own religion only? Who are you to sit and interpret what is an essential or a core aspect of another religion? Right? So basically, this is like another ummah on top of a ummah. I don't know how to react to that, Kushal, but I'll tell you what it is. You have various judgments and various laws in India that interact with the field of religion, right? And one category of those laws is dealing with administration of religious bodies and institutions and associations, etc. That's one aspect. Then you can have laws and rules, for example, this hijab ban in colleges, it's not even a hijab ban. It's a positive law for the promotion of a uniform to be worn by in school, right? The issue then is, can a hijab be added on? That's all, right? So this particular kind of law can be said to step into more of the religious domain, or is created to have step into the religious domain, making sure of the fact that the lawmaking body was not legislating on religion. It is legislating on aspects that are squarely within its powers. I'm saying that today in a broad sense, though in the writ petition, the geo under which the dressing code was established, even that has been challenged as being beyond the scope of the powers. Okay, and this matter has been referred to a constitution bench of the Karnataka High Court. So good or bad, one way or another, now we will have judgment on whether hijab is an essential religious practice or not. Right? What this does then, and this is where I have that initial interpretation that I gave to 25(1) was, in my view, a better interpretation. Amana very eloquently pointed out hijab is a sort of victim blaming. It is a form. It is a patriarchal instruction. It is essentially rape apologia. If something happens to you without the hijab, your mistake is yours. You should have worn the hijab, right? In any other source, if this kind of language originated, it would be called victim shaming and rape apology, right? Now, if you then make a rule, you are therefore, because of the ERP, limiting your ability to make laws that say there are values within these religious codes, and it's not one religious code, it's all religious codes. There are values within these religious codes that we will not accept. Right? If the core value is a negative value in your view, tough luck. The ERP will protect it. Right? So this ERP test, in my view, creates a very bad and limited
ability for what it does is it allows for protection of bad ideas in certain senses, right? And this is one of my fundamental problems with the ERP tests. Yeah, I just have a question. So so how you started with the whole Article 25 thing? It seems like the Constitution wanted to deal with the sole principle, which was based on the harm principle, and you and I have discussed this multiple times, right? Like, if the harm principle is violated, then it doesn't matter what practice that is, religious or in the secular realm, it should be done away with. And then the essential religious practice necessarily does is it creates this, what we would call in a fallacy term, a slippery slope fallacy, where how slippery do we take this slope? And this is a classic case then. And apparently I hurt a lot of people when I asked this question, and that's exactly what I was trying to do when I did question this whole essential religious practices ideology or thinking, was when I said, religious books also talk about wife beating. People may not like it, they do. And I can quote multiple sources from multiple religions. So zippity doodah. So everybody can be happy. I don't spare any religion in that matter. Now, if I use that, and then if I use this slippery slope of the essential religious practices doctrine, what am I going to justify next? Am I going to justify this? And also, in this whole Sikh religious turban, also, I want to talk about something. And this is, again, something at a philosophical level that has been bothering me a lot of times. Amana did mention about it. She's like, oh, that is not a symbol. But let me go a little deeper and even explain this in a much more specific way. There are fundamentals, and then there are fundamentals. I Before you go a remember... little further on that, Kushal, the turban is an ERP. It is a part and parcel of the requirements of the Sikh religion within the Guru Granth Sahib. किरपान भी है, वो That's नहीं what I'm अलाउ saying. होगा. तो ये essential religious practice का मतलब तमाशा है. That means not all essential religious practices are equal in the eye of the law, because even within the Sikh religion कोई भी स्कूल में किरपान अलाउ नहीं करेगा. पग अलाउ कर देंगे वो लोग. Yeah, it is set up for hypocrisy. It is set up for वन hypocrisy. There's no doubt. वन थिंग आई वांट टू ऐड कि अगर मुस्लिम की भी जो एसेंशियल प्रैक्टिस है वो 5 पिलर ऑफ इस्लाम है, उसमें नमाज जो होता है ना, 5 टाइम का प्रेयर, वो सबसे पहले आता है. तो आप कहाँ पे स्कूल में कोई बच्चा जाता है तो वो एसेंशियल प्रैक्टिस के नाम पे नमाज थोड़ी पढ़ता है. वो वहां पर जाके डिमांड करना स्टार्ट करेगा, मुझे प्रेयर रूम चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कब क्लासेस चल रहे हैं, मैं जाकर के वहां प्रे करूंगा. वो तो अलाउ नहीं है. और ये जो हिजाब और बुर्का है, ये एसेंशियल प्रैक्टिसेस में कभी नहीं आया, 5 पिलर ऑफ इस्लाम में नहीं है, बट इसको बनाया जा रहा है. तो आप ये भी देखो ना कि जो एसेंशियल प्रैक्टिस एक्चुअली में है वो तो नहीं आते आड़े कहीं पर, जब स्कूल चलता है, कॉलेज चलते हैं तो, या ऑफिस चलते हैं तो. सो आई थिंक इट्स मोर देन दैट ओनली. ERP भी बहुत सेलेक्टिवली यूज होता है इन देयर सेंस, क्योंकि यही एसेंशियल जो रिलीजन प्रैक्टिस है, ये कभी आड़े नहीं आते हैं जब हिंदू बिल कोड को रिफॉर्म किया जाता है. ये तभी क्यों आड़े आते हैं जब माइनॉरिटीज के प्रैक्टिसेस और कस्टम्स की बात होती है. सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने कभी नहीं सुना वो सबरीमाला में लड़की को जाना था, या मतलब जितना भी होता है, तो कभी मैंने नहीं सुना कि एसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिस है तो इसकी वजह से जो है आपको हम ये चीज नहीं देंगे. वहां हमेशा वो जेंडर राइट की बात हो जाती है, बट अदर कम्युनिटी में वो सेम चीज क्यों नहीं होता है? ये आई डोंट नो ये किस तरह से स्टेट ने एस्टैब्लिश किया हुआ है, बट यही चलता आ रहा है 70 सालों से. नहीं, वो हमने, वो तो ऐसा है ना कि वो जो बिग बॉस वाली, वो कौन सी थी वो लेडी, उसने बोला था तोड़ा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता, वो वाला लॉजिक होता है ना. हर जगह हम लोग अपना चेंज करते रहते हैं. मगर अगेन मैं ये टर्बन वाले इशू पे फिर आना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू मेक माय पॉइंट हियर दैट दिस इज फिलोसॉफिकली सच अ बैड आर्गुमेंट दैट what they do in this whole essential religious practice thing is that they assume all essential religious practices are equally the same and equally valid. Now, in some cultures, again, you may not like it, female genital mutilation is essential. What are you going to do then? Where are you going to draw the line? Yes, there are some cultures in Africa that do that. There are some communities in India that do that. What are you going to do? You're going to draw the line there. So it might be an essential religious practice, but it has to pass the harm principle, right? The pug does, the kirpan doesn't.
Why does the hijab or the burqa or the niqab or the chador not pass that test? It stems, as Amna rightly said, it stems from a patriarchal root. It does not. And even within that, there are layers. I would still say it's okay, आप बुरका मत पहनो, अगर आपको टर्बन और उसमें कुछ इक्विवेलेंस करनी है, ठीक है, हेड गियर बांध लो, अपने ऊपर जाना है स्कूल में, हेड गियर डाल के डालो, जाना है. But then, Nikhil, I come back to you. Then it creates the slippery slope, right? Then why are the Hindu children, boys and girls, wrong in demanding a saffron scarf then? वो भी हेड गियर है, हम भी ऐसे बांध लेंगे, हिंदू बच्चे बंडाना बांधेंगे सैफरन वाला, हिंदू बच्चियां सैफरन चौदह, मतलब हो रहा क्या है ये? सो आप स्कूल्स को, कॉलेजेस को एक मल्टीकल्चरल फेस्ट एट बेस्ट, in a best case scenario banana chahte ho. In that circumstance, this will never end well. It will never ever end well. My problem with these identity markers is that they're exactly that. They're identity markers, right? A lot is assumed about you when you wear these things, and what happens with it is you also seek out others wearing that same identity marker, and so cliques get formed. There is a lot less mixing with each other. What do you want in schools and colleges at that young age? You want all these identity markers removed so that kids at a young age realize and learn the most essential principle is learn to judge other people only for their actions and their character. Forget about everything else. Right? This is what you want as a value to be promoted. So, I look at all of this sort of legal development on this issue, and I wonder why the courts have often gone down this path. The way the law is, the way the article is designed, sure, it does require some investigation of the religious principle, and that can't be entirely avoided altogether. But for the court to come and make a declaration that we say this is essential and this is not essential, that is an ecclesiastical determination. And that's a very unwise route and unwise structure in life. Be that as it may, that is the law today. Right? So today, for example, when the counsel on behalf of the girls is arguing in court, he is compelled into this corner where he has to argue this point. That is the way the law is structured. He has to argue ERP. And it's a very bad way. I mean, if you look at ERP as an argument also, it almost ends up, so if you protect this, you almost end up mandating something of this sort. If you call it an ERP, it's an essential practice. Then. Either you follow it and are Muslim, or you don't follow it and you are not Muslim. That's how. That's my understanding of essential, right? And that's where Amana has so eloquently pointed out that there are 5 pillars of Islam, and this does not come into those pillars. So what do you end up doing? You actually end up subverting agency in a setup where your argument is that you actually want to promote agency. What is the agency? The agency is that I wish to wear the hijab, right? But you made it into an essential practice. Now it's almost a mandate. So you've subverted agency as well. No, also, what Khalid, is ironical? Khalid, I have a question. Actually, I have a question for you. I have a question for you only. So in this entire furor, what I actually was wondering about is, look, when I used to go to school, I don't know, my school was like this. We didn't even have religious prayers. We just had Janagana Mana in the morning and Vande Mataram when we closed the day, the national anthem and national song, and it used to end at that place for us. Everybody used to wear a uniform. Kids from multiple religions used to come, Hindu, Muslim, Sikh. Sikh बच्चा turban पहनता था तभी भी. That was the only religious symbol. And बाकी कुछ था नहीं, मतलब इवन कड़ा भी नहीं था, क्योंकि I mean I am a Punjabi, so in Punjab it is very common ना, हिंदू हो या सिख हो, हम लोग कड़ा पहनते हैं. वो हाथ में वो जो स्टील का पता नहीं मोटी जाड़ी सी बैंगल sort of thing होती है. It's very common in our community, but never in the school. And it was in a weird way ना Khalid, it was a secular space for all the kids where they were just individuals and their community identity actually did not matter. Now, my question to you, Khalid, is that isn't it good that India is bathera religious outside our, outside our schools? This was the one place where we actually had some semblance of secularism left. So बच्चों को थोड़ा एक क्या बोलते हैं ना, एक contrast मिल रहा था. मतलब हम लोग हर जगह हमारे religious ghettos ही बनाना चाहते हैं क्या खालिद? See, that is what they are trying to do by getting into schools. No, schools were the only space where all this was, taken off, and there was no othering
by your own self or othering by someone else. But in this case, they want to get into that also. They want to have an exceptionalism there and use the argument of equality, right? And what about tree? Get in the Sikh turban, get in, other things. And these are just things of convenience they want to use. Other thing I wanted to, Nikhil was helping us understand the law. What is ironic is that the courts now, the problem which plagues our community is that every religious clergy and even some of the religiously driven guys have this favorite game within our community, which is called who is a true Muslim, kaun banega asli Musliman. Okay. Now it's the courts of a secular country who are telling them bhai main banega judge और मैं बताएगा कि कौन बनेगा ट्रू मुस्लिम. एक तो मतलब ये कितना एक डिस्टोपियन रियलिटी है इंडिया का. ठीक तो है. कोर्ट टू उलेमा भी मच हो गया ना अभी फिर. हाँ एग्जैक्टली, टू मच ऑफ फ्रीडम. दूसरी चीज आयरनी, 30-40 साल पहले व्हेन द अरबाइजेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के भी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आई विल स्पीक अबाउट इंडियन मुस्लिम्स, नहीं हुई थी. So you never saw these kind of attires being worn by a lot of people. It was a minuscule rarity. ठीक है. Once the Arabization started, they took the culture as the religion and started to want it to be more Arabs than the Arabs. Even though the Arabs, with their supremacist attitude, look down upon them. They don't feel that they are real Muslims, right? Now, when the Arabs are turning away from that, these guys are instead telling them, no, we are more Arabs. And you have a secular court who's actually, deciding ki, haan, we'll tell you who's Muslim and all. So problem is, I think there is a complete overhaul required, even the way the law works here or the way institutions have shaped up, whatever structures have been put in place, because courts have no business, deciding that which aspect of which religion is the essential practice and which is not. It should go by the constitution, which should accommodate their beliefs, but it should not be, beliefs cannot be used as a yardstick of a progressive society, a democracy which wants to move ahead in terms of rationality. I think that index and that scale they use is ki, acha, this is what, see, every belief system by the virtue of its existence will negate the belief system of someone else. So who are we to even philosophically, ethically, or practically decide ki which one is correct and which is not? And to have a country which is the most diverse on the planet, which is its strength as well as its weakness, you have 8 major world faiths in India. 4 are born out of in India, out of them, like Jainism, Sikhism, Hinduism, and they have all they're born here, right? Buddhism. So the point is, 8 will have 8 different structures, 8 different philosophies challenging each other. The court can't use that. The court has to use something which they feel rationality के quotient से वो सही है. वो किसी मजहब से भी निकल सकता है in a particular way. बट ये पूरा वॉप नोशन कि आप उन्हीं के फिलोसफीज यूज करके देख रहे हो कि अच्छा ये टेस्ट करता है कि नहीं, वो कैसे कभी होगा? नन ऑफ द 8 रिलीजन्स will ever have something where they are uniform in that. Hence the thing uniform. आप मतलब uni singular, आप स्कूल जाते हो तो वहाँ यूनिफॉर्म होती है बिकॉज सब लोग सेम होते हैं, राइट? So इस चीज को भी चैलेंज करना, बिकॉज वेदर पीपल लाइक इट और नॉट, टू मच ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, टू मच, मतलब इतनी ज्यादा फ्रीडम है और उसके बाद भी इसको फैसिस्ट एंड ये बोला जाता है. बट कुछ तो एक सेफ गार्ड रखना पड़ेगा आपको, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज टू मच. हर चीज पे आप उठ के कह देते हो कि नहीं ये मेरा हक मार रहा है, वो मेरा हक मार रहा है. आप एक स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. वो स्ट्रक्चर जो आपको सेफ गार्ड करे आपके फ्रीडम्स. ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि योर फ्रीडम इज ओनली बीइंग यूज्ड अगेंस्ट यू. अच्छा, ये एक और अब ना मेरे को, ताकि मैं लोगों के क्वेश्चन लूँ ना, इसके पहले मुझे एक और चीज को बहुत, जो मुझे सबसे ज्यादा इरिटेट करती है, जिसके बारे में मैंने आज लिखा भी था ना, कम्युनिटी शुड रिफॉर्म फ्रॉम विद इन, आउटसाइडर शुड नॉट स्पीक अबाउट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, define outsider, define insider. Is Shia an outsider for a Sunni or an insider for a Sunni? Is a Bohra outsider or insider? Is a female who decides I will not wear the burqa or the niqab or the chador or the hijab, like one on my screen right now, is she an outsider or an insider for the Muslim community? So is she allowed to speak or not to speak? Because I don't know. There seem to be too many purity tests going on these years. First of all, I just believe in one identity. That is my Indian identity. That too loosely. I'm not even a nationalist and a patriot. But ठीक है, अभी कुछ तो एक line draw करनी है, तो उधर line draw कर ली है.
So first of all, this whole shenanigan about, you know, oh, Muslim women के बारे में हिंदू लोगों को क्या बोलने की जरूरत है, क्यों नहीं बोलूं, तेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं बोलूंगा. तो ये जो घटिया लॉजिक है कि आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक. दूसरा, यू नो, रिफॉर्म शुड चेंज हैपेंस ऊपर नीचे से ऊपर आता है, नहीं आता. हिंदू सिविल कोड 1955 में आया था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली. थोपा गया था, नेहरू ने थोपा. कौन सा सर्वे हुआ था इंडियन 57, हाँ. तो कौन सा बड़ा एक डिटेल्ड सर्वे किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, साइंटिफिक सर्वे, और जाके हर हिंदू को पूछा था, हाँ भाई तुम्हारा व्यू क्या है, कर देंगे कर देंगे. मतलब किस किस्म की बकवास लगा के रखी हुई है. यहाँ तो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म यूएस की, तभी एक्चुअल में सर्वे थे. मोस्ट वुमेन वर कंफर्टेबल विद नॉट हैविंग वोटिंग राइट्स, बोलो, but they still got it done. Why? Because there was the activist group that was relentless, and then the government was like, okay, we give in, and all the women got the rights. But the surveys done at that time, most women did not want it. अंदर से आना चाहिए, आता ही नहीं था कभी. तो ये बकवास जो चालू है, अब बोलो आमना. सबसे पहले ये जो लोग आर्ग्यूमेंट कहते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी में के लोग हैं वही बात करें, यही लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है जब ये मुस्लिम जर्नलिस्ट होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो हिंदू कास्ट सिस्टम के ऊपर बात करते हैं. not a single tweet or anything I have seen जो जाकर उनको बोले कि अरे तुम तो मुस्लिम हो, why you are speaking about हिंदू कम्युनिटी. तो ये जो विकेड वे में एक नॉर्मलाइजेशन हुआ है ना, कि जहाँ पे मुस्लिम्स को या किसी भी माइनॉरिटी को पूरा राइट है मेजोरिटी के रिलीजन, कम्युनिटी, प्रैक्टिसेस, कस्टम सब पे बात करने का, जबकि अगर कोई मेजोरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है और अगर वो बात करे यही सारी ह्यूमन राइट्स के बेस पे, तो वो बिगट हो जाएगा, वो कम्युनल हो जाएगा. ये चीज एंड होनी ही पड़ेगी. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, अगर ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जब बोलते भी थे ना, हमेशा हुआ ये है कि जब हिंदू कम्युनिटी के जो एलीट और इंटेलेक्चुअल हैं, वो जब मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बोलते भी थे तो वो ये बोलते थे कि अब इनके यही तरीके हैं तो वी कैन नॉट फोर्स. इफ यू रिमेम्बर, वो ट्वीट मैं कभी नहीं भूलूंगी, एंड आई विल कीप हाईलाइटिंग दैट ट्वीट, कि मुझे तो चाइल्ड मैरिज के मैं अगेंस्ट हूँ, बट अगर ये इनका वे ऑफ लाइफ है तो ये इनको मालिनी करने पार्था दो. सारथी, हिंदू. एग्जैक्टली, हिंदू. और मुझे इस सॉफ्ट तरह बिगेटरी के ऑफ लो एक्सपेक्टेशंस कहते हैं इसको. मुझे तो वो उससे भी मतलब ज्यादा ही लगता है. मुझे लगता है कि सॉफ्ट वो नहीं है, इट्स लाइक सम काइंड ऑफ वांटिंग टू बी मसीहा ऑफ द कम्युनिटी फॉर ऑल द टाइम एंड चलो कीप मैं देम एक टू. और कड़वी सच्चाई आमना आप लोगों को बोल देता हूँ. मैं अभी हिंदू सीक्रेट आउट कर रहा हूँ, ट्रैड जिसको बोलते हैं ना, ट्रैड हिंदू सीक्रेट. तो आपको क्या लगता है उनको क्यों इंटरेस्ट है कि ये चीज में हम कमेंट नहीं करे हो? उसके दो रीजन है, और ये मैंने सुना हुआ है. पहली बात, वो मुसलमान को मलेच समझते हैं, तो मलेच के बारे में क्या सोचना यार, मलेच है वो, तो मलेच के बारे में क्या सोचना. दूसरा, अगर मैं मलेच की प्रॉब्लम, उनकी भाषा ना, उनके हिसाब से मलेच की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तो वो तो उठ के मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना. तो मतलब वो तो फिर आ गए ये प्रॉब्लम. राइट, राइट. तो एक तरफ तो वो है जिसको मसीहा एक और बताया. चीज, सॉरी आमना टू इंटरप्ट यू, उसी के साथ ऐड करने, आरिफ मोहम्मद खान साहब का एक फेमस इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने सेम चीज कहा कि कांग्रेस के किसी हिंदू लीडर ने उनसे कहा था कि अब वो गटर में रहना चाहते हैं तो रहे. राइट. यू नो, उस पे काफी एक कंट्रोवर्सी हुआ था. हाँ, This is तो the आरिफ time of साहब ने Shahban. बाय ऑन प्रिंसिपल इतना पावरफुल पोजीशन छोड़ा उस टाइम, और 20-30 साल उनके पास कोई पोजीशन नहीं थी. लेकिन वो अफसोस की बात ये है ना, दे हैड द बेस्ट इन हार्ट फॉर द कम्युनिटी, व्हिच ऑफ कोर्स वाज बेटर फॉर द नेशन आल्सो. सो उनको कैटेगोरिकली वो कांग्रेस हिंदू लीडर ने कहा था कि अब यार ये मुसलमान गटर में रहना चाहते हैं तो रहे. अफसोस ये है कि हमारा सेक्युलरिज्म जो शेप अप हुआ है, अगर कोई बात करता है इक्वालिटी की कि अगर वो रूल हिंदू के लिए सही है, हमारे लिए भी सही होना चाहिए, राइट? तो वो आप सिर्फ इक्वालिटी मांग रहे हो, लेकिन कोई अगर सुप्रीमेसी, एक्सेप्शनलिज्म मांगे, आप उसको बैकअप कर रहे हो. ये अलायंस ना, ये माइंडसेट चेंज होना चाहिए. हमें कोई मतलब, वी डोंट नीड सेवियर्स फ्रॉम द Hindu community as owners and all that, and them saying ki let me pick up these victims, my exotic pets, and play up my masiya complex. We just need equality. And अगर आपको वो equality देने में डर लग रहा है तो वो भी कह दो कि ठीक है यार, नहीं, इनके रेडिकल से हम डरते हैं, अपने रेडिकल्स को तो हम हर दिन गाली दे सकते हैं, और मतलब जो रेडिकल्स नहीं भी हैं.
तो ये एक इक्वल जो नहीं आता ना अक्रॉस कम्युनिटीज, और टाइम एंड अगेन आप सेक्युलरिज्म की उम्मीद सिर्फ एक कम्युनिटी से करते हो, और आप कॉन्स्टेंटली देखो, आपने कहा कि मैं क्यों ना बात करूं, करनी चाहिए आपको। ओवैसी साहब की पूरी पॉलिटिक्स तो इसी चीज पे है ना कि उनका दिल रोता है हिंदू दलित्स के लिए, राइट, उनके अलायंसेस होते हैं हिंदू दलित्स के लिए। रियलिटी क्या है वो अलग बात है, लेकिन तो अगर हिंदू फिर एक पासमंदा जैसे आमना लोअर कास्ट मुस्लिम है उसके लिए बात करें, तो वो क्यों आप बिगेटेड कहोगे? तो ये पूरा जो सेक्युलरिज्म का आपको एक माफिया बना दिया है ना, उसमें हिंदूज को भी समझना चाहिए कि आप ठीक है, ये बहुत आपकी एक बड़ी बात है कि आप में इतनी डाइवर्सिटी है कि आप चाहते हो हम पूरी तरह से डिमोनाइज ना हो कम्युनिटी, राइट, ठीक है, लेकिन दोनों साइड के आर्गुमेंट्स प्रिंसिपल पे तो सुना करो यार। ये जो दिमाग में बनाया है कि एक जो मेरी कम्युनिटी है उसमें तो सिर्फ रेडिकल्स हैं और दूसरे में तो मजलूम है, और जब वो उनके एक्सट्रीमिस्ट एक्शंस होते हैं तो आप चुप बैठ जाते हैं, आप कई बार जस्टिफाई करते हैं। आप यही देखिए ना, 3 इशू हुए 1 महीने में, ठीक है, लवन्या का फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा था, उसकी डेथ हो गई। किशन ने एक मीम शेयर किया जो पसंद नहीं आया रिलीजियस क्लर्जी को, मुस्लिम ने उसको मार दिया। और अब एक तीसरा इशू है कि ये 6-8 लड़कियों को बुर्का पहनना था विद इन द प्रेमाइसेस। अब आप देखिए कि इन तीनों को लेके कितने डिफरेंट रिएक्शंस थे और कितना डिफरेंट नैरेटिव चला। तो तब पहले केस में किसी ने किसी कम्युनिटी को पूरा जनरलाइज नहीं किया, दूसरे में भी नहीं किया, वेरी गुड, लेकिन पैटर्न्स भी नहीं बुलाए, तो वो एक रह गया मेजोरिटी में कि इसकी बात नहीं हुई। तीसरे में पूरे को जनरलाइज कर दिया। तो ये बहुत अजीब सा सेक्युलरिज्म है और ये कॉस्ट करता है नेशन को अक्रॉस कम्युनिटीज। तो ये इसको अगर इसको चैलेंज करना चाहिए, मतलब आप प्रिंसिपल के बेसिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं, और ये करप्ट है, तो मुझे लगता है इसका जो इसके प्लेयर्स हैं ना, दे अंडरस्टैंड कि ये करप्ट सिस्टम है, ये इंसेंटिवाइज करता है करप्शन, तो फिर वो भी अपनी गेम वैसे ही खेलते हैं, नो। दे ऑल्सो अपील देन टू द वेरी बेसिक इंस्टिंक्ट एंड कि अच्छा इसमें विक्टिमाइजेशन, इसको बोल दो, हाँ देखो यार तुम्हारे तो पूरे इंडिया में बोल रहे हैं अब तुमको लगाने नहीं देंगे ये अटायर, या ये देखो कितना तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, और वो लोग भी वही सुन के वही नैरेटिव वही इकोसिस्टम न्यूज का जो आता है उसमें ये वो सुनते हैं ये। तो ये ये सारा एक स्ट्रक्चरल ओवरऑल होना चाहिए। ये बहुत नॉर्मलाइज हो चुका है। देखो अभी एक चीज हुई थी जो मैंने नोटिस की कि एक मुस्लिम लड़की ने एक पीआईएल लगाया था अगेंस्ट दिवाली पे जो सेलिब्रेशन होता है, राइट, एंड उसको बोला गया कि वो इन्वायरमेंटलिस्ट है। किसी ने नहीं बोला कि वो कम्युनल है और उसको ये बात नहीं करनी चाहिए। व्हाई शी इज टॉकिंग अबाउट द हिंदू रिलीजन का फेस्टिवल। वो पीआईएल लगाती है और उसको एक डिसीजन मिलता है। लेकिन वहीं पे जब पीआईएल लगाई थी कुछ, आई थिंक उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, बट दे बिलोंग टू हिंदू फेथ, और उन्होंने पीआईएल लगाई थी अगेंस्ट लाउड स्पीकर। तो उस पे एक पूरा नरेटिव बना था कि किस तरह से हिंदू जस्ट वांट टू गो आफ्टर मुस्लिम, एंड वो वहां पे कम्युनल बन जाते हैं, वो वहां पे एक एक्टिविस्ट नहीं देखे जाते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये इस पे डिस्कशन होनी ही पड़ेगी। एंड ऑल्सो लेट मी से मे बी इट कैन बी पॉलिटिकली इनकरेक्ट, बट जब हिंदू सोसाइटी के जो बहुत लोग हैं, स्पेशली जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, उन्होंने अगर अपनी कम्युनिटी में बहुत रिफॉर्म आ गया है ऑलरेडी, तो वो क्यों नहीं चार्ज ले सकते बाकी कम्युनिटी के अंदर भी जो प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है उसको डिस्कस करने का? इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप ही हमें बोलते रहते हैं ना कि हम सब पहले इंडियन हैं बाद में हिंदू मुस्लिम है, राइट? तो ये हम सब पहले इंडियन हैं बाद में हिंदू मुस्लिम है, तो हम ये चीज यूनिफॉर्मली क्यों नहीं अप्लाई करते? ये हम तब हैं जब आपको चुप कराना होता है एक दूसरे को, स्पेशली मेजोरिटी को, कि तुम लोग चुप हो जाओ, डू नॉट स्पीक। तब आप उनको बताते हो कि तुम इंडियन हो पहले, प्लीज डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट माइनॉरिटी एंड ऑल। एंड वो अगेंस्ट भी ये होता है कि जो रीजनेबल क्वेश्चन है आप उनको वो भी नहीं पूछने देते हो। बट वही हम सब इंडियन हैं तब नहीं आता जब एक दूसरे के प्रॉब्लम कंसर्न्स को एड्रेस करने होते हैं। और जब तक इंडिया में ओपनली डायलॉग नहीं होगा, स्पेसिफिकली बिकॉज वी आर सो डाइवर्स, ऑनेस्टी के साथ एक दूसरे से बात नहीं होगी, वी विल ओनली हैव स्टीरियोटाइप्स फॉर ईच अदर, जो मैं बहुत ज्यादा देखती हूँ। कई बार मैं देखती हूँ कि कम्युनिटी में प्रॉब्लम है। इवन आप देखो कि इसका मुस्लिम कम्युनिटी को भी कैसे हार्म होता है, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन मुस्लिम कम्युनिटी बट देयर आर नॉट सो। लेकिन जब कम्युनिकेशन नहीं होता है तो जो प्रॉब्लम नहीं भी है कई बार उसको भी एक प्रोपेगेंडा बोल लो या जो भी है, एक स्टीरियोटाइप में सामने ला के रखा जाता है, एंड नोबडी इज देयर टू
to establish any kind of communication, क्योंकि एक साइड वाले दूसरे को नहीं सुन रहे हैं, दूसरे वाले एक साइड को नहीं सुन रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नेशन के लिए भी बनता है, कम्युनिटी के लिए बनता है, एक दूसरे के लिए स्टीरियोटाइपिंग होती है। प्लस ऑब्वियसली मुस्लिम को एक शील्ड मिल जाता है कि वी आर नेवर गोइंग टू रिफॉर्म, क्योंकि हमसे तो कोई बात ही नहीं करेगा, एंड हमारा तो मतलब वी हैव स्पेशल प्रिविलेज वाली जो फीलिंग है वो आती है। एंड एज खालिद वेरी वेल सेट कि ओवैसी का पूरा पॉलिटिक्स दलित पे बेस हो सकता है, बट कोई भी हिंदू कम्युनिटी से आकर के मुस्लिम वीमेन राइट की बात नहीं कर सकता है। इवन इंडिविजुअल छोड़ो, जो स्टेट है, स्टेट इंडिया का, वो तो किसी रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं करता ना, वो तो इलेक्टेड एक बॉडी है। वो अगर मुस्लिम विमेन के राइट के लिए एक लॉ लाना चाहते हैं तो वो भी कम्युनल हो जाता है। लेवल यहाँ तक है। एक और चीज आई इंडिया वांटेड में टू तो ऐड ऐसा टू है ना दिस, कि अगर बीजेपी बोल दे कि ग्रेविटी रियल है, मैंने जैसे बोला ना, तो ग्रेविटी भी अपोज की जाएगी इस देश में। एक और चीज आई वांटेड टू ऐड टू आपना's आर्गुमेंट। आप रिसेंटली ये केस लीजिए, एक साल से जो ये स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का है। मुनव्वर फारूकी आज की डेट में काफी फेमस हो चुके हैं। ऑब्वियसली अगर हिंदू मेजोरिटी कंट्री में है तो मेजोरिटी हिंदू से ही उनको सपोर्ट है, वही देख रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए ना, जब उन्होंने हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस के बारे में मजाक किया तो एक सेक्शन था हिंदूज का जिन्होंने उस चीज को सपोर्ट किया, एक सेक्शन था जिन्होंने कहा था कि ये इनइक्वालिटी है बिकॉज ये अपने फेथ और बाकी फेथ्स को नहीं करेगा। उन लोगों को इंटॉलरेंट बोला गया, ठीक है। अब आप देखिए कि कोई और दूसरे मजहब से अगर वो मुनव्वर फारूकी नहीं है, कोई राम शर्मा है या कोई भी है, वो अगर मुनव्वर फारूकी के मजहब के रिगार्डिंग मजाक उड़ाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो डेफिनेटली जब आप वो इनइक्वालिटी रखोगे और आप उसको एक विक्टिम भी बना दोगे, स्टार भी बना दोगे, तो वो एक फॉल्ट लाइंस कैसे ब्रिज होंगी। आपने आपने कहा उसको चलिए वो कर सकता है, ठीक है, लेकिन हम बाकियों को अलाउ नहीं करेंगे। जब वो कह रहे हैं कि फिर तो इक्वालिटी रखिए आप कह रहे हैं नहीं, तो इसमें भी तो आपको सोचना पड़ेगा ना कुछ, कि ये फॉल्ट लाइंस क्रिएट करता है कंट्री में, बिकॉज ये आप प्रिंसिपल पे नहीं जा रहे हो। आप कह रहे हो कि नहीं चले हमें तो चलता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, मैंने कई सारे थ्रेड्स पढ़े जिसमें आम मुसलमान लड़के लड़कियां कह रही थी कि हमें नहीं पसंद है कि ये मजाक उड़ाए, we don't accept this kind of thing, हम क्यों किसी के गॉड्स का मजाक उड़ाए। लेकिन उनको आप नहीं सुनना चाहते, ठीक है, उनके अपने बायसेस होंगे, अपने कन्विक्शंस होंगे, लेकिन एक वो भी नहीं चाहते अल्टीमेटली ये सब। लेकिन ये जो माफिया जिसने और जो अपने आप को सेक्युलर कहता है, बिल्कुल सेक्युलर नहीं है, और ह्यूमनिस्ट कहता है, कंप्लीटली नेशन के अगेंस्ट है, उनके पास इतनी पावरफुल पोजीशंस हैं और उनके पास इतना पावरफुल मीडिया है, पैन नेशनलिस्ट इकोसिस्टम का सपोर्ट है कि वो ये सब करते हैं। और ऑब्वियसली दोनों साइड से फिर इशू होता है। देखिए 1-2 साल में क्या हुआ कि देयर वर इंस्टेंसेस ऑफ सम मुस्लिम पीपल, वो स्पिटिंग का कुछ इशू हुआ था, ठीक है। अब बजाय टू टेक इट हेड ऑन एंड से कि हाँ कुछ होंगे ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स, क्रिमिनल एलिमेंट्स, तो वी आर अगेंस्ट देम, यू हैव दिस फैक्ट चेकिंग प्रोपेगेंडा वेबसाइट जिन्होंने कहा कि ये हुआ ही नहीं। तो यहाँ से मेजोरिटी को गुस्सा आ गया कि ये तो ये डिनाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद उस कबाल को आपको यू डिडंट टेक ऑन। फिर होता क्या है कि यू इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑन दोज पर्टिकुलर एलिमेंट्स फ्रॉम द कम्युनिटी, परसों आपने फिर शाहरुख खान के ऊपर एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी, आपने कहा वो भी थूक रहा था। फिर मुसलमानों को समझाना पड़ा कि नहीं भाई वो फूक मार रहा था, और आप भी एक रिएक्शन मोड में फिर एक पूरा जनरलाइज करते हो। तो जहां पे आपको इशू लगे, वेदर वो मुनव्वर के केस में हो या वेदर स्पिटिंग के इंसिडेंट्स में हो, आप उस टाइम कैटेगोरिकली वो एलिमेंट्स की बात कीजिए। आप भी दबाए रखेंगे, वहां से एक जो कबाल है वो उनको प्रोटेक्ट करता रहेगा, आप एक रिएक्शन मोड में जाएंगे, फिर आप एक पूरी कम्युनिटी को जनरलाइज करेंगे, इतने बड़े आइकॉन को फिर एक आप एक्विजिशंस करेंगे, तो फिर दोनों साइड से वो मडी होता है। तो मेरा तो सिंपल है कि अगर कोई चीज सही है किसी कम्युनिटी के लिए, तो वो सारी कम्युनिटी के लिए ठीक होनी चाहिए। तो अगर वो तो आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप अपने राइटफुल पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, लीगल चैलेंज कीजिए कि अगर ये ऐसे मजाक कर रहा है तो कैन ही अफोर्ड टू डू दैट विद अदर फेथ, राइट। लेकिन keep at it and then ask similar questions from other religions कि अच्छा अगर वो घूंघट कह रहे हैं तो फिर वो बुर्का को कैसे नहीं अप्लाई कर। तो प्रिंसिपल्स पे, अगर वो प्रिंसिपल्स पे नहीं खेल रहे हैं, यू कैन यूज द पाथ ऑफ यूजिंग द प्रिंसिपल्स, एंड उससे फिर दोनों कम्युनिटीज में थोड़ा तो एक होश सा आएगा कि ये इस वक्त थोड़ा वॉर्प्ड है, बहुत अनइक्वल है जो
चला आ रहा है, और ये पीपल सिर्फ इक्वालिटी की मांग कर रहे हैं, कोई ऑप्रेस नहीं करना चाहते आपको। तो प्रिंसिपल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो छोटी सी छोटी माइनॉरिटी हो या बहुत बड़ी मेजोरिटी हो, लेकिन प्रिंसिपल तो देखो, जैसे मैंने कहा 8 मेजर वर्ल्ड फेथ्स और तो कहीं नहीं रहते ना दुनिया में इतने सालों से। तो अगर जो चीज अमर के लिए ठीक है वही अकबर के लिए भी होनी चाहिए, वही एंथनी के लिए, मनमोहन के लिए भी, किसी पारसी के लिए भी, किसी बुद्धिस्ट के लिए भी, किसी एथिस्ट के लिए भी। और ये गिनाना तो है ना आपको कि हाँ भाई हम में बहुत सारी खामियां हो सकती है, लेकिन ये ग्रेटनेस भी है। या तो आपको सिर्फ सेल्फ लोदिंग वाले मिलते हैं, या तो आपको सिर्फ रिएक्शनरी मिलते हैं, लेकिन एक आम इंसान, आम इंडिया, आई एम श्योर इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में है, इसीलिए तो इंडिया चलता रहता है। तो आई थिंक देखिए वो तो पैटर्न्स सोशल मीडिया है खालिद, so I'll just come in here. That's just social media. I don't think so we should, and stupidity is not the monopoly of any community. Stupidity is a human trait common to everyone. Kushal, So, let me I just hope the give अमर you अकबर एंथनी का एक्सटेंशन वो ना हो जाए जो वो तीनों की बॉडी में से एक साथ खून दे रहे थे. That was too much. let me explain the legal problem or how the law has been structured. कि ये जो इन्होंने कहा कि एक इवननेस होनी चाहिए, वो इवननेस चली कहाँ गई, वो प्रॉब्लम आई कहाँ से? तो मेन प्रॉब्लम जो आई, एक जजमेंट आई थी नरसू अप्पा माली in 1952, Bombay High Court. At that time, the Hindu code was not in place. Bigamy was legal for Hindus. बिगमी पे थी फिर से, और उसमें एक प्रिंसिपल होल्ड किया गया। ऑर्डिनरली अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे किसी भी लॉ के अगेंस्ट, आपकी पहली रिक्वायरमेंट होती है ये प्रूव करना कि आर्टिकल 13 के डेफिनेशन में वो लॉ है। जो चीज लॉ नहीं है उसके खिलाफ आप फंडामेंटल राइट्स की रिट नहीं लगा सकते, राइट? सो आर्टिकल 13 requires that you have to establish that what you are challenging is in fact law as defined under Part 3 of the Constitution. This judgment said, no personal laws के customs, usages, etc. और personal law के जो legal codes हैं, they are not law under Article 13, right? So that took personal law out of the domain of challenge under various fundamental rights. इसीलिए आप इन चीजों को, तो आपने क्या किया इवेंचुअली, आप लॉ बना सकते हैं, पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ स्टेपिंग ऑन दीज थिंग्स, करेक्ट? सो गोइंग बैक टू व्हाट आई हैड सेड फ्रॉम quoting Ambedkar said religion covers everything in this country. Now if religion covers everything in this country and personal law is protected, then tomorrow if you had no law, religious law would apply. That is the logic. State steps in and state starts legislating and paring down the space that religion has, right? This is the same mentality that then comes up with the idea, okay, it's being pared down, now we only need to protect the essential religious practice. This is how these things go hand in hand. So I cannot think of a judgment that I loathe more than more than Narasu Appa Mali, because it is the basis, the root in which religion was given legal sanction in a way in which it will regulate your lives over and above secular law, provided that secular law at that point in time does not occupy the field. This is why, for example, the UCC has become so difficult and so protracted over a period of time. So, but Nikhil, isn't that the only thing that needs to save this country? Sorry? But isn't the UCC then the logical conclusion and the only solution for this? See, you and I would say it's a logical conclusion and only solution. But what I'm trying to pinpoint to you is that in what we created consciously a very multicultural system because of this. Everybody gets to do their own thing. This was the problem we have already. So the mentality is already in place. So yes, you and I will always say UCC is an essential solution. But the mentality now over 75 years is no, sorry. What the UCC would amount to is actually an egregious stepping on our toes. And that is why the UCC is often fundamentally opposed, especially when the UCC. I have one question. अगर कोई नया रिलीजन बनाता है अपना और उसमें बहुत ही वियर्ड एसेंशियल प्रैक्टिसेस रख के अगर इंडियन कोर्ट के पास जाके बोलता है ये हमारी एसेंशियल प्रैक्टिस है और हम ये नया रिलीजन है, हम ये फॉलो करते हैं, तो क्या कोर्ट वो अलाउ कर देगी? क्योंकि नाउ दिस इज कमिंग एज अ रिलीजन,
You know, this has happened. This has actually already happened. मैं judgement का नाम अच्छा, मेरे जैसा कोई बेशरम होएगा. नहीं, I'll tell you which one it was, यार. This happened in the context of Anand Margis. Anand Margis had set up their own separate sect, and they came and said the Tandav dance is an essential religious practice of ours. Very I interesting. like that religion. Very interesting, because Amana जो point raise कर रही हैं, कोर्ट ने essentially वही कहा है 2 बार. एक बार जब पहले आया, उन्होंने बोला कि आपका रिलीजन इतना न्यू है कि हम इसमें कोई ईआरपी मानते ही नहीं, चलो आप साइड पे हो जाओ, या तांडव तो ईआरपी है ही. तो वो लोग कुछ साल वेट किए, उन्होंने फिर फाइल किया, और उन्होंने कोर्ट ने फिर बोला अभी भी इतना टाइम नहीं हुआ, अभी भी हम ईआरपी नहीं मानते कोई आपका. So this kind of rubbish is going on. You know, this is legally sanctioned bullshit. So this is exactly what I said. So this is the second problem which stems from the slippery slope problem, which is the classic case of the Sorites paradox, which is what I just want to complete this. Kushal. So what is Tandav? Tandav is a public dance performance with weapons in hand, right? You don't need bloody ERP or this or that to ban Tandav. You just turn around and say there's a harm principle involved. Finished. So all of this is so unnecessary, but this is the edifice we have built upon, right? And now we've created this. So this country is built on ghettoization, na? So if we now say we are going to take a scalpel and destroy all of these divisions, legal divisions, this sort of arbitrage, that will be considered invasive. That is a breach of rights. This is a psychology we possess today. Yeah, because we created, community-based ghettos, and I see this all over Twitter now, and it's very clear, right? The left likes the ghettoization because it gets to treat the minority in courts like a little baby. Aale mera bachcha, aaja mera bachcha, main tere ko batata hu kya karna. You know, it's like that. And then the Orthodox Hindu or the trad Hindu, I would not use the word Orthodox, that's a wrong word, I take it back, because Orthodox Hindus are decent people, but the trad Hindu, which is nowadays found this new tota, decoloniality, will be like, no, see, you don't get it, we want a pluriverse. In the pluriversality, there are different groups hustling for rights, and then they'll use the word salad right out of the postmodern book, and then they'll payload these word salads. But the serious problem is, Nikhil gave a very good example of this new religion coming up, and that leads to the Sorites paradox, right? So you keep on piling grains and grains and grains and grains and grains, but when does the grain become the heap is the Sorites paradox. So when does the religion become old enough and the practice become integral enough to the religion to be A, considered a religion which is unique from the other culture, and B, become a practice which is so unique to it? And these are the problems that we need to take up. But anyways, I'll take the viewers' questions now, Nikhil, and I come straight to you first. ये बंदे ने क्वेश्चन पूछा, मुझे हंसी भी आ रही है. So will judges deciding ERP for Muslims be Muslims first, or non-Muslim judges get to decide essential religious practice of Islam? Is there a legal framework for that too? चलो सत्यानाश हो गया हमारा पूरा. Fortunately, the judge who will decide is decided only by the High Court or the Supreme Court's roster. It's not decided by the religion. Very unfair. So, but if you raise this question and you raise the issue of bias from those who are not of that religion, triple talaq, there was one Muslim judge and one Sikh judge, and they both held triple talaq as an essential religious practice. And it was the Parsis and the Hindus who held it is not religious practice. So now will you turn around and say this is not a valid judgment? Because it's only one set of religion that is looking at it and saying this was not an essential religious practice. मतलब मैं सच बोलूं, मैं तो कई बार इस देश के ऐसे डिस्कोर्स, इतने जीनियस लेवल डिस्कोर्स को देख के ना मेरा ऐसा हाथ जोड़ने का मन करता है, मतलब भाई अगर मौका मिले निकल जाओ. ये absurdities को बाहर उतारना बहुत जरूरी है. Everybody has to face these absurdities. These are your realities. हम लोग ऐसे लोग हैं, मान लो पहले, और अब उसको बदलो. अच्छा, आमना, ये आपसे प्रश्न है.
So because you raised this point about othering of Muslim girls, ये question मैं आपको ही पूछूंगा. Would a hijab ban then just result in Muslim women not going to school and thus further isolate them, or would it force them to adopt to modernity? आप जवाब दो. Forceful modernity, I don't think there is such thing. Yeah, I mean, can't say, क्योंकि I need to have a look into datas and all. टर्की में तो वैसे काम किया भी है, if you see. Right. हिंदू कोड And बिल में, सो जस्ट टू सपोर्ट यू, कोई हिंदू कोड बिल को कोई सपोर्ट नहीं था इंडिया में, मगर वो हो गया. एग्जैक्ट हो गया, तो इसलिए मतलब आई डोंट नो, बिकॉज मैंने ये भी आर्ग्यूमेंट पढ़े हैं कि कई बार फोर्सफुल मॉडर्निटी बैकफायर भी करती है. बट देन आई सी द टर्की एंड आई सी इवन इवन इन सऊदी थिंग्स आर चेंजिंग ड्रास्टिकली, कि अभी उनके वर्क फोर्स में 33% वुमेन फोर्स आ गया है. मतलब इट्स अ वेरी बिग चेंज इफ यू सी. तो इट वर्क्स ऑल्सो देखो, जो लोगों को एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी है, वो जाते हैं, उनके लिए इतना हिजाब मैंडेटरी नहीं है. प्लस इंडिया के अंदर ऐसे इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, आप वहां जाके अपने एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं. इट्स नॉट लाइक कि आपको कहीं पर अलाउ, मतलब इतनी डाइवर्सिटी इंडिया में है, अगर किसी को ये भी इशू है तो यू कैन गो टू सर्टेन स्कूल और वहां पे जाकर के आप अपनी एजुकेशन पूरी कर लीजिए. तो आई डोंट थिंक कि अगर ये इस तरह का जो लॉ है यूनिफॉर्म, जो लॉ अगर स्कूल में आता है तो वो बैकफायर करेगा या नुकसान करेगा. मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल में आइडेंटिटी असर्ट करने का बहुत नुकसान हो सकता है. एंड स्कूल एक जगह है ना जहाँ, जैसे मैं अब स्कूल में पढ़ती थी, क्रिश्चियन, वो कॉन्वेंट स्कूल ही था, लेकिन वहां पे बच्चे आते थे, ज्यादातर हिंदू के बच्चे होते थे, देन क्रिश्चियंस भी थे. तो मैं जब उनसे मिलती थी एज ए फेलो स्टूडेंट, तो मैं उनसे बहुत कुछ सीखती भी थी. मुझे उनके कल्चर से बहुत कुछ मालूम पड़ता था, उनको मुझसे बहुत कुछ मालूम पड़ता था. तो वो जो सेग्रीगेशन आ जाता है ना, तो वहां पे बातचीत में कम्युनिकेशन भी प्रॉब्लम होती है. फिर वो जो बुरके वाली लड़कियां हैं, वो दो चार बुरके लड़कियां को ढूंढ के साइड में बैठ जाती हैं. इस तरह की चीजें भी देखी है मैंने. तो आपको स्कूल में प्रमोट करना है, वो बहुत ही बेसिक लेवल है जहां से बच्चों का फ्यूचर बनता है, माइंड सेट प्रिपेयर होता है हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए. तो वहां पे तो एटलीस्ट ये आइडेंटिटी असर्शन, ये रिलीजियसिटी ओवर मैनिफेस्टेशन, वो सब ना ला करके बच्चे आए एज ए नॉर्मल इंडियन सिटीजन, एक दूसरे से बात करें, सीखे, पले बढ़े, एजुकेशन लें. इस चीज को बढ़ावा देना ही पड़ेगा वहां पे. तो मुझे नहीं लगता, अगर चलिए ठीक है, दो तीन लड़कियां हैं जो नहीं जाएंगी स्कूल, तो क्या होगा, नहीं जाएंगी, वो ढूंढ लेंगी कोई अपने लिए ऐसा स्कूल जहाँ पे हिजाब और बुर्का और ये सब लगा के स्कूल जाया जाता है, और वो इंडिया में अवेलेबल है. अच्छा खालिद, आपके लिए क्वेश्चन है. So somebody has asked, how influential is the PFI in the Muslim community? Will they be successful in creating organizations with a further regressive mentality inside the community? If you ask the average Indian Muslim, which is like the second largest community of India, starting up from Kashmir to Kanyakumari, 25 crores, I guess, is the population, for like Hindus being 100 CR and then Muslims 25 CR. The average Indian Muslim would not even know the name of PFI. They would not know. Maybe pockets of South in Kerala, but here in Maharashtra, where I come from, or even Kashmir or other parts, they would not know what bird is this PFI and what is it. And I have also seen both from Hindus and Muslims who are students of the country and follow current affairs and all. Many a times when they are asked, what is this PFI doing? What is this PFI doing? Maybe some are a little sly also. They're like, tell your government, why aren't they banning it then? So the fact is ki, when you have a Jignesh Mevani who accepts donations from PFI, when you have so much on the internet which speaks about the activities of PFI, when you have a communist state like Kerala, which has such a powerful communist system, in the assembly saying that there should be a ban against them, even though communists sadly, over the years they've become allies with Muslim extremists and supremacists. So that is a failure of the Indian state, to be honest, at the end of the day. I mean, Let me add to that, normal... the PFI today is on a spree of filing defamation cases against people. Oh, some we know about. So the point is that many a times people have asked this on the internet, that there is so much you can read about, that their role in so many sinister conspiracies is there. Why the respective state governments of India and the central governments and other agencies have not cracked down upon them? What will an average citizen do यार? I mean, ultimately judicial system से वो वो जाना भी नहीं चाहता वहां, because सालों लग जाते हैं उसमें.
अगर ऐसे कोई डेफिमेशन आ गया, उसके साथ लड़ना, रोजमर्रा की जिंदगी कमाने में ही टाइम लग जाता है। तो वहां पे एक्चुअली दिस लीड्स टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इतना वीक स्टेट पता नहीं मुझे और कौन सा स्टेट है दुनिया में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक तो किसी भी मजहब के नेशनल पेट्रियट्स और नेशनलिस्ट होना इतना लेट डाउन करती है ना इंडियन स्टेट उनको, मतलब कहीं भी आप देख लीजिए, बदकिस्मती है कंट्री की, दे हैव लेट डाउन कुछ को, दे डू ऑनर देम। बट ये एक अजीब एक प्रॉब्लम है ना, इतना स्टेट मतलब किसी चीज पे इतना इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं, इतना वोट बैंक कॉन्शियस, लाइक एक ये कंट्री को they just see it as like a means to get to power. So no, the average person does not know much about them. आई Okay, थिंक so Nikhil, यूपी में शायद बैन है ना पीएफआई, योगी ने शायद किया था। I honestly I don't follow that organization all that much. I'm just asking a question because somebody asked it. मेरे को तो beyond a point मुझे तो समझ नहीं पड़ता है। अच्छा Nikhil, somebody is saying, what is your hunch? What is going to happen in the larger bench now? Why should बताओ I crystal answer ball में that? देख के Mr. Mehra. Yeah, but bhai, you're asking me to determine whether hijab is an ERP or not. Well, spare me, boss. I don't want to get into these kind of silly things. Essentially, that question asks me to determine whether hijab is an essential religious practice. Spare me, please. I have no idea. My understanding from speaking to very well-educated persons on Muslim law who are also Muslims is that it's unlikely to be an ERP. So on that level, तो ठीक है, अगर वो मुस्लिम लॉ के बारे में तो मुझे नहीं मालूम, मगर even whether the veil is a compulsory thing, what was that? Wasn't there an orthodox scholar who had given a fatwa? Let me search. My friend had sent that fatwa to me in 2016. It was the search for beauty on beauty and reason in Islam. Okay, let me share this. In the meantime, I'll ask another question. I'll share this fatwa also. It is an interesting fatwa. Okay, this question anybody can take up. Okay, I'm not Kushal, before that, could I just come in? I just wanted to add to Nikhil what he said, about the essential. The birthplace of Islam, now just a few months back under King Salman, he is on record in an interview I think he gave it to the Dubai-based Khalid Times, that burqa and abaya are not necessary now in Saudi. So the thing is, again, there are various interpretations. Whether you are in a liberal place like UAE, whether you're in Turkey, whether you're in a secular Muslim majority like Tunisia, everyone has their own interpretations. So now, when the birthplace itself says that it's not compulsory and it's not even in the 5 pillars, so definitely the case for that is stronger that it is not. So again, the interpretations are different amongst the 50 odd Muslim nations. So who ultimately decides that what is the essential religious thing? I just wanted to add. I agree with you. So I have opened this apparently this fatwa from an orthodox scholar here. So I'll just share it. Just info. So this fatwa is there. A friend of mine shared it. Fatwa on permissibility of not wearing hijab, issued on 31/12/2016. God, you guys can go and read this. It's a large fatwa. So this is what it is. It's there are fatwas and then there are fatwas. I'm sure another orthodox scholar might come up with another version. Kushal, that fatwa must be making a theological case, right? It must be making a case for why it's a mandate. Yeah. No, it's actually saying it is not a mandatory thing. In fact, it goes ahead and explains how the fatwa is not necessary, the hijab is not necessary and stuff like that. And it goes into that word, a particular word है, क्या वर्ड था मेरे को याद नहीं, खिमार वर्ड, अरबिक का वर्ड है ना, KHIMAR. It goes into that detail and stuff like that. But yeah, I mean, my whole answer is, why do I care? It should not matter. In a secular country, in a modern society, these things should not matter. So I'm just trying to look, because a lot of questions are interrelated. But this one question, I think I'll take this last question and then we'll wrap it up. And I think we should all take this question up as, concerned Indians, that, this whole thing about, okay, the girls come
in a hijab or a burqa. I don't know. एक तो उसके ऊपर भी डिबेट है, वो हिजाब पहनना चाहते हैं, बुर्का पहनना चाहते हैं, क्या पहनना चाहते हैं वही डिसाइड नहीं हो रहा है अभी तक. And then this saffron scarf. So what kind of a society are we trying to build? Has somebody asked me exact पढ़ना चाहता हूँ. What did they say? Would this also lead to counter radicalization in the Hindu society? And shouldn't we also be worried about that? Now, somebody might think, why am I asking Khalid and Amna for their views? Well, as Indians, they should have a view about counter radicalization in Hindu society. So, Amna, आप पहले बोलो Khalid and then Nikhil, and then we can wrap it up. अब रिएक्शन तो ऑब्वियसली मैं देखती हूँ, एक रिएक्शन होता है एंड वहां पे मुझे कई बार लगता है कि उस रिएक्शन में नुआंसेस हो जाते हैं. दैट हैपेंस. रेडिकलाइजेशन वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड एंड आई डोंट थिंक, क्योंकि एक चीज और भी है, हिंदू सोसाइटी की जो बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है इट्स नॉट वेरी, मतलब वो राइट फिंगर टाइप की है नहीं जो बहुत ज्यादा मेजिटेरियन साइड में टिल्ट हो. ऐसा उनका स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत फ्लूडिटी है. बट हाँ, एक रिएक्शन तो 100% हो रहा है. और एक ट्राड जैसा जो चीज मैं देख रही हूँ, बिकॉज द काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट ट्राड्स ब्रिंग, इट्स वेरी वेरी एंटी विमेन. मतलब मुझे जो विमेन के लेके बड़ा ही दिक्कत होती है, तो दे यूज आर वर्ड, कॉलोनाइज्ड हो हम ना, तुम्हें समझ नहीं पड़ता. हाँ, बट उन्होंने एक पता नहीं क्या पोस्ट लिखा था जिसमें वो कंगना रनौत को स्पेसिफिकली आर वर्ड से बुला रहे थे, बिकॉज द वे शी कंडक्ट हरसेल्फ और उसका जो लाइफ स्टाइल है. तो वो अगर ट्राड, प्लीज वो नहीं चाहिए हमको. आई डोंट वांट दैट सेक्शन टू ग्रो. तो रेडिकलाइजेशन तो नहीं बोलूंगी, बट इस तरह के एलिमेंट है जो मुझे लगता है कि भाई ये नहीं आने चाहिए. सो दैट्स इट. आई डोंट हैव मच व्यू अबाउट इट. खालिद बोलो. I'll go back to my argument which I made कि जब आप principles में equality लाओगे, जब आप अगर लवन्या जैसा केस होगा और उसमें आप पैटर्न्स की बात करोगे कि जिसकी वजह से ये इश्यूज होते हैं, और फिर आप वो ऑनेस्टी रखोगे कि इसलिए ये इशू को एड्रेस करना है, इसको एक स्ट्रक्चरल रेमेडी लाना है, कम्युनिटीज के बीच में बात करनी है कि क्या इनहिबिशंस हो सकते हैं अगर लवन्या जैसा केस हो. सिमिलरली जब आप किशन जैसा केस हो तो आप वापस से वो ऑनेस्ट डिस्कशंस कर सकते हैं और आप डबल स्टैंडर्ड नहीं रखे किशन और मुनव्वर के केस में. और सिमिलरली जब ये तीसरा एक इशू आ जाता है, wanting to don the burqa, and you can categorically speak about the fact that no, it's not banned across the country, it's as free a country. You want to wear the burqa, you're allowed. Want to wear the niqab, you're allowed. Want to wear the hijab, you're allowed. You don't want to wear it, you're allowed. So once this equality comes in, because that lack of equality happens, the same principle is not applied across communities, and there is only expectation from one community to do it. That is when we see the reaction then from the community saying that we are not ready to put up with this. Now, of course, any extremism by any elements in any community, ultimately first it devours the other, then it devours the people within. So that checks and mechanisms and that moral ethical framework is a community's thing. But wahi hai, I think at the core, it's very simple also, yet it's very complex also. That the principle has to be equal across communities. You can't have exceptionalism for some. You can't have this whole thing thrown on the burden of secularism just on one community. So I think that is the way I see it. And I would also like to quote Hamid Dalwai in this, where he said, yes, to a large extent, the Hindu communalism is a reaction to the Muslim communalism in the Indian subcontinent. So, of course, it will help solve a lot of issues if you call off the extremists within the Muslims, and automatically you'll see the toning down of tempers from the elements in this. And of course, as Amna said, any sort of people who then want to imitate the ideological nemesis only, that's problematic. Obviously, वो अपने ही community को फिर वो they'll start stifling them. So that would be my last word on the issue. बोल निखिल, अभी लीगल जो ट्रैजेक्टरी है वो कहाँ जाने वाली है, बता दे. Minaz Merchant has written an article in the Open magazine very recently. In fact, I think it was just before this hijab issue broke. That was in the context of Kishan Bharwad. So, and he actually identifies, he says there are problems happening.
he doesn't look at it as radicalization. He doesn't look at it as, but what he does say is that there is a lesser sympathy now amongst middle class Hindus, and their reaction to certain things is "ho gaya to ho gaya." So he's identifying it, and exactly what Khalid quoted in the context of from not in the context of, but from Sudalvai, that is exactly the same refrain that Minhaz has. Yeah, I agree with you. I don't know where this is going to go. I'll share my concerns. First of all, I normally don't speak a lot when I host the podcast, but today I wanted to, so I will. So, because this is something I feel very strongly about. So there are many things that are happening on social media. There are different, arguments being given. The argument from the left is that it does not matter. Priyanka Gandhi says, "लड़की हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ." तो she to said, "लड़की को बिकिनी पहननी है, पहनने दो. बुर्का पहनना पहनने Can I दो. say घूंघट something पहन." about that Priyanka Gandhi comment, Kushal? This is the हाँ. slate of hand. This is the slate of hand. The choice argument reduces these things to only a piece of cloth, right? They refuse to engage with the argument that there is a value underlying that piece of cloth, and it's that value which is being attacked. They don't want to address that argument. So when people say choice, it's that I can wear anything. Of course you can. Of course you can. When you have the choice, it's quite clear you're not suffering from the same value system that is being handed down by that piece of clothing. I agree. So like I said, I'll make the closing comments today. This entire debate has a significant problem, which I would say, how do you frame the issue? So one way to frame the issue was, कोई आदमी एक अपना एक कूल वे में कॉर्नर में बैठा हुआ बोल रहा है, अरे why do we even have uniforms in the school? चाचा अभी 75 साल हो गए, अभी तू यूनिफॉर्म को क्वेश्चन कर रहा है, पहले ही क्वेश्चन कर लेता था, अभी यूनिफॉर्म है तो क्या करेंगे? Is my answer to that. That's a separate debate. Should schools in India have uniforms? Now, the United States of America does not have. Everybody wears what they want to wear and they live their lives. But what the United States of America does have is a very secular state. It will not allow many things that are allowed under the garb of secularism in India. The United States of America will not allow that. So to give an ingenuous argument like, अमेरिका में तो यूनिफॉर्म्स होती ही नहीं ब्रो, बट अमेरिका में यूनिफॉर्म सिविल कोड है ब्रो, सो वो भी बात करो, उसकी भी बात करो. सो गेट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, सारे स्कूल की यूनिफॉर्म निकाल दो. डार्थ वेडर पहन के भेजूंगा मैं बच्चों को बना के, सारे डार्थ वेडर आएंगे, मेल एंड फीमेल दोनों. बाकी समझदार को Kushal, just a small thing. मेरा बस चले तो everybody should be allowed to wear Govinda colored uniform. I'll judge you for this, Khalid. I will judge you so much for this. Govinda for life, all the Jintak clothes, and it'll be such a happy, vibrant school everywhere, everybody dancing to all his songs. Dude, he's my all-time favorite. Like Govinda, like he's the god of acting. So he gives you so much of happiness, you look at his movies, the comic timing he has and all. So just wear Govinda wale school, whatever he used to wear in the 90s. Everyone will be chill, man. I mean, that will be Govinda supremacy. Khalid is now Nikhil is ready managed to say something which is even more dangerous than ERP. So now we go into the next set of arguments. So there are people framing this argument very differently, right? So there's this next set of arguments that is, why are you trying to reform somebody from the other community? Well, here's my answer to all of you. They are not from another community. They are my community. In fact, one of the first monologues I ever did, an 8-minute segment on my podcast, second or third tha, the 11 minute tha, was actually that there are around 8 to 9 crore, 8 to 9 crore Muslim women in India. To say they are the other has to be the biggest load of rubbish I've heard in my life. In one sweeping statement or one flick of a brush, you have othered 8 to 9 crore women, and you're supposed to tell me that I'm not supposed to look at them. उनको जो करना है करने दो, नहीं मैं तो देखूंगा, मैं तो कमेंट करूंगा. There is this another argument. Only people with skin in the game should talk about it. I do have skin in the game. Not only skin in the game, to all the Taleb fans, I'll use another Taleb word. I have soul in the game. वो भी Taleb ने बोला था. So people who care for their nation, who care for their society, who want its upliftment have soul in the game. I have soul in this game. So I will comment on it. So that also is a load of rubbish. पगड़ी वाली आर्ग्यूमेंट तो मेरे को आज तक समझ नहीं पड़ी. मतलब पगड़ी
Sam Harris once said a very good line. He said the fundamentals of the religion matter. And when you are a fundamentalist, it depends on what kind of a fundamentalist you are. So let's say you are a religion that was fundamentally built on the premise that all gods are equal. And let's say you are a fundamentalist of a religion that believes all gods are not equal, only my God is the real God. Both of them are not equally valid arguments. One is better than the other. Then there is this argument that is now coming in through a Abdul Qadir Googly in the form of an old wine in a new bottle, and they think nobody's going to call them out. Well, I'm here to call them out. Is the decoloniality argument that this whole thing about wanting uniformity, wanting to look at people as individuals, is a Western Christian secular concept. Everything is Western, everything is. Well, if it is, first of all, it is not. That's a separate issue. If it is, I'm okay. It's a better concept. Because all these people, whether on the left or the non-left, and all these people, all they want to put us in is ghettos in a society where everybody is living in their ghettos. But sometimes what happens is Abdul is a good bread maker, but Raghav might be a good, pastry maker. Now, Abdul Jabardasti has to deal with Raghav, but Abdul stays in his ghetto, Raghav stays in his ghetto, and if Abdul has some habits, Abdul's community has some habits where women are suppressed, let those women suffer. Who cares? Similarly, if Raghav's community has a problem and has habits, let them suffer. Who cares? I did not know something until actually my dear friend Nikhil Mehra opened my eyes. We were talking about divorce laws, and then Nikhil one day on the phone tells me, "Ek kaam kar, जरा Christianity के divorce laws पढ़ ले जरा, तेरी आंखें खुल जाएंगी." And lo and behold, I did read them because उसने मुझे लिंक भेजे. मैं डर गया उनको पढ़ के. इतने खतरनाक divorce laws है Christians के. And I would, one day maybe Nikhil and I will talk about that load of poop also. But that is for another. The biggest argument against this idea of you have to have skin in the game is the manner in which the Constitution has dealt with caste. You didn't need skin in the game. You need a good idea, that's all. Totally agree with you. So please, you did not stop need this internal nonsense. reform. You needed to be structure needed to be smashed down, and it was smashed down. Nobody can then turn around and say, "Oh, we didn't get time. Sorry, you don't deserve time." But that also happened, Nikhil. That also happened in the case of the Hindu society. Now you have a classic case. Look at Amna's community. She's suffering. The caste problem did not get solved there too. In that too, we had ghettoization. Solving a problem versus having a legal mandate are two separate things. Legal mandate is only a part of the larger solution. Actually being able to solve it needs so much more, right? I'm only pointing out that you don't need skin in the game to start that one mandate first, to say it is wrong. What a law does is it makes a declaration of values and of principles. It says straight away, X cheese theek hai, Y cheese theek nahi. And it says it with the power of the state behind it. So it's a very different thing altogether. Yeah, I agree with you. So please stop this rubbish. The real battle is, again, Nikhil and I have spoken about this many times offline. The real battle is what matters more, group rights or individual rights? Also, secondly, which lens should we look at the society from? Do we look at the society from a group rights lens, or we look at the society from an individualistic lens where we are all individuals first? I could care less what their religion is. I could care less what Nikhil believes in or what Khalid believes in or Amna believes in. I don't care. I just look at them as individuals and then I judge them on that basis. They happen to be Muslim, they happen to be Hindu, I don't care. But this is the crux. The Indian left and a section of the Indian non-left together are in total agreement that the Indian legal framework and the Indian societal outlook has to be based on this ghettoized group rights based worldview. I'm not party to that. I leave you guys with these thoughts. You don't have to agree with me. वैसे भी आधे लोग मुझे गालियां ही देते रहते कमेंट सेक्शन में, तो उसकी तो मुझे आदत लग गई है. मगर आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गालियां मेरे गेस्ट को भी देना, ऐसे उनको भी अच्छा लगना चाहिए कि थोड़ा अकेले क्यों फील करूं मैं हमेशा मैं क्यों गाली खाऊं, उनको भी थोड़ी गाली दो. And on that very positive note, Amna, Khalid, Nikhil, thanks a lot for coming. Thank you. And I would just want to say, Govinda supremacy. That's the thing. And I want to say, guys, please check out हमारा भी जो YouTube channel है India This Week. We are also trying to bring some perspective there over the issue. तो अगर आप वो भी check out करेंगे तो it would be helpful.
Yeah, all the Absolutely. Govinda fans, please go go and subscribe to the channel. The issue will get solved in Udupi. हर दिन बच्चों को इकट्ठे गोविंदा की मूवी दिखाओ. They'll laugh. They'll see what craft is, and Jintak clothes. You wear the best of clothes, and it's fun. And a great dancer too. I can go on and on. Someday we'll do a program just for Govinda. All right. Yeah, we will do that. All right. Oh man. All right, guys. Bye. Time to wrap up today's discussion. Once again, please subscribe to the Cārvāka podcast, like the video, leave your comments, become a member either on YouTube, Patreon, buy the merch, you know the jazz. And I'll see you next time. Until then, take care. Goodbye.